Hello. Uh, the participant having Galaxy Z6, please turn off your video. Galaxy Z6. The participant who is having Galaxy Z6, please turn off your video. Hello, Dr. Madhu Sharma. If you are hearing my voice, please turn off your video. हाँ हो गया. I heartily request to all participants, please turn off your video. For better quality of audio and video, please unmute. Please mute your audio and turn off your video. Yes. Because if there will be any requirement to on your video, we will ask to you. So please turn off your video. It will increase your bandwidth also. Dr. H.S. Bhandari ji, can you hear me? Yes, sir. You are audible, sir. Is it cracking or clear? It is clear, sir. Okay. Hello. Okay. आवाज Dr. Rajendra Purohit, sir. I hear on this platform. Dr. Rajendra Purohit, sir. अभी तो 4 मिनट है. यानी कि
सभी को नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर द्वारा आयोजित इस वन डे नेशनल वेबिनार ऑन लाइफ साइंसेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार का विषय रिसेंट एडवांसेज इन लाइफ साइंसेज है, जिसमें आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर वीके सिंह जी, वाइस चांसलर एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर, व गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रोफेसर एमएम सक्सेना जी, वाइस चांसलर टाटिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर, डॉक्टर शिशि शर्मा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एमएस कॉलेज फॉर विमेंस बीकानेर राजस्थान, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे पैटर्न डॉक्टर जीपी सिंह जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, जिनके कुशल नेतृत्व व दिशा निर्देश से ही डूंगर कॉलेज बैक टू बैक विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कर रहा है। आज के इस वेबिनार के मुख्य आकर्षण, जो हमारा विषय है रिसेंट ट्रेंड्स इन लाइफ साइंसेज, पे हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे हमारे एमिनेंट स्पीकर्स प्रोफेसर विनीता शुक्ला, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा, डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल, कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट टाइगर वॉच रणथंभौर सवाई माधोपुर, प्रोफेसर बीएन पांडे, प्रेसिडेंट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार। आप सभी का भी मैं गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आप सभी की सूचना के लिए सूचित है कि इस राष्ट्रीय वेबिनार के लिए 18 राज्यों से लगभग 500 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि यदि आप जूम एप्लीकेशन पर वेबिनार को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वेबिनार का लाइव प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से भी करवाया जा रहा है, जिसका लिंक इस वेबिनार के लिए बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स में दे दिया गया है। आप वहां जाकर के भी इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार को शुरू करने का शेड्यूल जो समय है इनॉग्रल फंक्शन का, वो 11 बजे है, और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं 11 बजे वेबिनार के इनॉग्रल फंक्शन में। थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स कृपया जूम एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए अपना वही नाम रखें जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया है, ताकि हम उनकी उपस्थिति दर्ज कर पाएं, क्योंकि हम उन्हें मीटिंग में उसी नाम से पहचानेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, काफी पार्टिसिपेंट्स ने अपना जो नाम है वो या तो उनका मोबाइल का जो नाम है, मोबाइल का मॉडल है वो लिखा हुआ है, या उनका नंबर लिखा हुआ है, तो कृपया उसे चेंज कर लें। और इसके साथ ही चैट बॉक्स में अपना परिचय न दें, अपना नाम, कॉलेज का नाम, गुड मॉर्निंग, इस तरह के मैसेज न लिखें। कृपया चैट बॉक्स को वर्दी चैटिंग के लिए छोड़ दें। कोई इंफॉर्मेटिव चैटिंग है, कोई मैसेज है, वो उससे मिस हो जाएगा। तो आप सभी से कोऑपरेशन की उम्मीद है। धन्यवाद।
Uh, Good morning to all of you. We all are here just to start the national webinar. Within 1 or 2 minutes, we are going to start this formal process of inauguration program. As our principal, Dr. G.P. Singh sir, is already here. Professor M.M. Saxena sir is also with us. And we are just waiting for Professor V.K. Singh sir, so that we are just within few minutes, within 1 or 2 minutes, we are going to inaugurate the session. मैं कह रहा हूँ सर 2 से ज्यादा में इको होता है यहाँ पे। नहीं वो आप अपने उसका ऑडियो जीरो कर दो नीचे से। नहीं नेट से हो जाता है सर, एक्चुअल में 4 नेट चल रहे हैं ना, सिंगल नेट होता तो कोई वो नहीं था, फोन से ही हो जाता है इको। वो आ जाएगा सर, अब आपका लाइव आ जाएगा, इस पे भी आ रहा होगा ना? इस पे आ जाएगा सर। सर आपका बंद करो, अनम्यूट करो, म्यूट करो। मैं फोन कर रहा हूँ सर।
नहीं तो सर्वर आवाज उठती है। हेलो हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। या आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। I once again request you all I once again request you all kindly strictly follow the kindly instructions strictly follow given the by the instructions organizers, given by the organizers. Honorable Honorable Vice Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, Honorable Principal Sir, Honorable Principal Sir, all are with us. they all are with us. So I request you So I all request you all to to mute mute your video and your audio. video and audio. Mute yourself. Mute yourself. Just we are going to start the Just we are webinar. going to start the webinar. I welcome you all I welcome on you behalf of all Organizing Committee. on the behalf of organizing committee. So, again, good morning to all of you. We are just going to start the session. कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्या? वीडियो किस नाम से? वीसी साहब के नाम से देखो, शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। देखो देखो जुड़ गए सर। Today, chief guest, Professor V.K. Singh, चलो स्टार्ट करो, साहब जुड़ गए। Vice Chancellor MGSU Bikaner, and guest of honor, Professor M.M. Saxena sir, Vice Chancellor Tatya University are with us. I request our patron and principal, Dr. G.P. Singh sir, and Secretary, Indian Society of Radiation Biology, Dr. Rajendra Purohit, and Organizing Secretary, Dr. Aruna Chakravarti, to kindly inaugurate the session by garlanding and lightening the lamp in front of Ma Saraswati. It is being run. We are at the video conferencing room at Chemistry Department, Government Ungar College, Bikaner, and lightning and garlanding of Ma Saraswati is being done by Dr. G.P. Singh. Now we are officially going to start the session. In the inaugural session, as you already know that Professor M.M. Saxena and Professor V.K. Singh are with us, and Dr. G.P. Singh sir is also with us. I request Secretary, Indian Society for Radiation Biology, Dr. Rajendra Purohit, who has been considered as one of the eminent researcher in the field of radiation biology, has produced 23 PhDs and 32 MPhil. He is having 30 years of vast research experience, visited throughout the globe, including USA, Japan, Singapore, and has published more than 100 research papers in the field of radiation biology. And further, he is actively engaged in the field of radiation biology, as well as he is also conducting various international national seminar in the field of radiation biology. And for this webinar, he is acting on behalf of Secretary, Indian Society for Radiation Biology. I request Dr. Rajendra Purohit to please kindly provide us some information and brief about this webinar. Thank you, Dr. Bhojak, for nice introduction. Good morning, Honorable Principal
Dr. G.P. Singh ji, guest of honor today's function, Principal MS College, Dr. Shashi Sharma ji, Principal MS College, Dr. Ravindra Mangal, Principal Government College, Nokha, all the members of Department of Geology, esteemed faculty members of Dungar College, members of the organizing committee, print, press, and electronic media. I, on my behalf and behalf of the organizing committee, welcome Honorable Vice Chancellor of Maharaja Ganga Singh University, Professor V.K. Singh, for gracing the occasion as chief guest. I welcome you, sir. I also welcome Professor M.M. Saxena, sir, Honorable Vice Chancellor of Tanti University, Sri Ganganagar, for being with us as guest of honor. I welcome you, sir, Professor Saxena Sahab. Here I would like to mention that Honorable Vice Chancellor, Professor Singh, during his first visit to Dungar College on October 28th, motivated all the faculty members and introduced with all the members. He has been a source of inspiration. I welcome and thank you very much, Vice Sir. Professor M.M. Saxena Sahab, he has also been a source of inspiration for many faculty members of the Department of Geology. I salute you, sir. I am happy to see you as the Vice Chancellor of our own department members. He was here, head the department. He was Professor, Maharaja Ganga University. Now he is holding the charge of Vice Chancellor, Tanti University, Ganganagar. Dear all, here I would like to mention, I had a dream to organize an international conference on radiation biology in Bikaner, and I tried my best to arrange the meeting during October 12 to 14, 2020. We all know, due to COVID-19, we could not organize the conference. Our principal, Dr. G.P. Singh ji, guest of honor, Dr. Shashi Sharma, head Department of Geology, Dr. Meera Srivastav, they all supported me in all respect. I welcome today's eminent speaker, Professor B.N. Pandey sir, Dr. Dharmendra Khandal sir, and Professor Vinta Sukla madam for sparing valuable time for Government Dungar College, Bikaner, and they are going to deliver their talk in this national webinar. I hope your deliberations will contribute a lot to all the participants of the webinar. Thank you very much, all the dignitaries. I welcome the co-patron, Dr. Salili Mulchandani, and Assistant Director, Dr. Rakesh Harsh, for helping and motivating the organizing committee to organize such a grand webinar. At the end, I request you all to bless me for the success of the webinar. Thank you very much. Now, we have with us our Honorable Principal, Dr. G.P. Singh ji. I would request the Director of Green Chemistry Center, Dr. Narendra Bhojak, to introduce Dr. G.P. Singh and invite him. Dr. Bhojak. I'm very happy and pleased to inform you that Dr. G.P. Singh sir, who has been patron and principal of patron of this webinar and principal Government Dungar College, is with us, and he is going to deliver his prominent words about the webinar as well as other gestures. I just take this opportunity to introduce him in front of you. He has been the alumni of Jodhpur University. He did his post-graduation from there in 1984 and then PhD in condensed matter physics from MGSU Bikaner, and then after 1984 he is working in the government institutions. Most of the time he has worked at the Government Dungar College. He has been member and convener of various academic and administrative committees of this university as well as other universities at state level. He has produced 5 PhD students and published more than 20 research papers and organized few conferences with the UGC sponsored seminars. More interestingly, which I would like to tell you, that he has been considered one of the major researchers in the field of condensed matter and the composite
physics field, and he has been one of the major pillar of Bikaner Interdisciplinary Research Consortium, which was designed by him and Dr. Ravindra Mangal in the year 2005, and we all are working with their blessings in this field. With these words, I request Dr. G.P. Singh sir to please provide us their objection. थैंक यू मोजक सर। आज की ये जो एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार है उसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीके सिंह, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर एम सक्सेना, कुलपति टाटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर। आज की इस वेबिनार के जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं, प्रोफेसर विनीता शुक्ला, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, डॉक्टर धर्मेंद्र, कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, रणथंभौर सवाई माधोपुर, प्रोफेसर बीएन पांडे, प्रेसिडेंट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्रोफेसर शिशिर शर्मा, प्रिंसिपल एमएस कॉलेज बीकानेर, प्रोफेसर रविंद्र मंगल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, राकेश हर्ष जी, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन राजस्थान बीकानेर डिवीजन, डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जूलॉजी गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, Dr. Rajendra Purohit, the main architect of this seminar, Dr. Aruna Chakravarti, the organizing secretary of this webinar. First of all, I congratulate the entire organizing team for selecting such a nice topic in the COVID-19 era. Main thing is the scientific studies from time to time of the natural science. Life science is one part of that. Of course, I am a student of the other part of that, which deals with the non-living matters, because basically when we talk as an academician, life science can be divided into, on one hand, we are dealing with living matters, and on the other, we are dealing with non-living matter. But now, the interdisciplinary approach, to my mind, is must. We cannot separate the two branches. And accordingly, what I feel is we shall upgrade our syllabus of school education as well as college education so as to include the basic fields, basic branches at least, which have emerged in various fields of life sciences. So for example, the concept of micro and nano organism, the BME concept, the biotechnology, biochemistry, bioinformatics, biophysics. If a student has a basic knowledge, initial scintillation in his mind at a school level or college level, what I feel is he or she will certainly able to contribute in the study of nature, which is created in the field of life science. So far as you all know, a micron size COVID-19
have created a great challenge in front of the world scientists. And I think from last 7 to 8 months, the entire global economy is affected by that man-made, I must say, micron-sized virus. As I am very much confident in nature, the natural symmetry rules reveals that any natural process has no place for such mistakes. What has happened in the race to compete with nature? The scientists have uh, optimized, you can say, has chosen a wrong path, a virus path, which results of which are in front of us. A great threat is for mankind. So, a new era, a new philosophy, a new thinking has to be developed, especially in the mind of youths. How to live with the nature. As it is clear, the COVID-19 effect is more in developed countries and more in the city areas than in rural area. What I feel is the people who are more near to nature, who are living with nature, are able to survive because nothing can be or anyone can be as accurate as the nature is. This is my feeling as a student of physics. In physics, we learn that the distance between sodium and chlorine molecule is fixed everywhere. There is no discrepancy. Same is the development of RNA, DNA, and so on. So natural rules are same for all. Only thing is when we try to develop at some stage or other, we fail to copy the natural sequences, and in that failure, the havoc, I must say, leads and which ultimately can destroy the entire global civilization. So, as academician, it's our sincere duty to organize such academic discussions. Not only organize, we should motivate, we should multiply to break such type of philosophy, such type of thinking. And we should bring our research results to the books as early as possible. Then only the your research work will benefit the students. In agriculture, people say the lab to land program. Here I say the research to book program. So in our country, especially in India, it's long awaited that whatever work is going on in our labs has to be brought to the notice of the students, and students must be encouraged, must be guided to work better in our laboratories, the facilities which are available. Because what is happening, the students working in India fails to produce anything, but when they go outside, say to US or any other country, they produce better results. So point is potentiality is with our student. Only thing is we need to guide them properly. We need to create an academic environment with uh, global thought, with a what I must say, thinking that how our studies can help to make our life better. Once again, I congratulate all dignitaries and
eminent academicians for sparing their valuable time for this seminar, and I hope the discussions which will be carried out during this seminar will certainly benefit the mankind. Thank you. Thank you very much, sir. I hope and wish that with your words and understanding of the research and technology, we will able to head this process. Now I request Dr. A.K. Yadav, Vice Principal, Government Dugar College and HOD, Department of Geology, if he's here. Dr. A.K. Yadav, sir. Since Dr. A.K. Yadav, sir, is not here, so I take this opportunity to invite our guest of honor, Dr. Shishir Sharma ji, who has been the HOD, Department of Geology, Government Dungar College, and has also worked as Vice Principal and Principal, Government Dungar College, Bikaner. He did his post-graduation from Rajasthan University and PhD from MDS University, Ajmer, having more than 35 years of teaching experience. He has been fellow of life member of various societies, including Geological Society of India, Bangalore, fellow of Indian Society of Remote Sensing, fellow of South Indian Association of Economic Geologists, has been vice chairman for Marwar chapter of South Asian Association of Economics. He has been recipient of various awards, including the Ishir Awards, organized few seminars of international and national repute, and published more than 45 research papers towards his credential. I request Dr. Shishir Sharma, sir, who has been appointed recently as principal MS College Bikaner, to address this eminent audience. Dr. Shishir Sharma, sir. थैंक यू डॉक्टर भुजक। सबसे पहले आज की इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीके सिंह साहब, वाइस चांसलर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर MM सक्सेना, हमारे साथी जो कि अभी टाटिया विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। इस वेबिनार के पैटर्न डॉक्टर GP सिंह जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अरुणा भारद्वाज, और इसके सूत्रधार, मुख्य सूत्रधार डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित। सबसे पहले सभी अतिथियों को नमस्कार और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस ऑनर के लिए चुना। जैसा कि प्राचार्य डॉक्टर GP सिंह जी ने बताया कि कोविड काल में इस तरह की गतिविधि होना एक मायने रखता है, क्योंकि इस कोविड के दौरान लाइफ साइंसेस के अंदर रिसर्च जो है उसका डायमेंशन चेंज हो गया है। पहले लाइफ के बेटरमेंट की बात होती थी, अब लाइफ के बचाव की बात हो रही है। तो किसी भी रूप में लाइफ साइंसेस के अंदर जो भी रिसर्च होगी वही हमारे लिए फायदेमंद होगी, वहीं पर हम कुछ आगे काम कर सकेंगे। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि ये वेबिनार सफल हो और इसके आउटकम से कुछ ना कुछ नया रिजल्ट आए। एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Shishir Sharma, sir. Now I request Dr. S.K. Verma to introduce Professor V.K. Singh, Honorable Vice Chancellor, MGSU, and invite them for their guidance and blessings. Dr. S.K. Verma. धन्यवाद भोजक सर। निर्देशानुसार
मैं डॉक्टर एस के वर्मा माननीय कुलपति महोदय का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, नवनियुक्त कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान का आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रोफेसर सिंह ने 29 जुलाई 2020 को इस विश्वविद्यालय में कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व प्रोफेसर सिंह IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में कुलपति पद पर आसीन थे। प्रोफेसर सिंह एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में दुनिया के टॉप 15 प्रोफेशनल्स के ग्रुप में दूसरे नंबर पर शामिल रहे हैं और पिछले डेढ़ दशक तक यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के निदेशक भी रहे हैं। बनारस में जन्मे और मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक और ME करने वाले प्रोफेसर सिंह ने 1980 के दशक में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पंतनगर विश्वविद्यालय से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जगत में आपने काफी लंबे समय तक अपना अमूल्य योगदान दिया है एवं आपने अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस से उत्तर प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जगत में अद्वितीय मुकाम हासिल किया है। एक बार पुनः समस्त राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर परिवार, ग्रीन केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर डूंगर कॉलेज बीकानेर और BIRC बीकानेर की ओर से भी मैं माननीय कुलपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। महोदय, हम व हमारे पार्टिसिपेंट्स आपको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, अतः और अधिक समय न लेते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय को आशीर्वचन व आपके संदेश के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर VK सिंह जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। हो गया? क्या मैं सुनाई पड़ रहा हूं? जी सर। ओके। सबसे पहले तो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर GP सिंह जी, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य डॉक्टर शशि शर्मा जी, MLB राजकीय महाविद्यालय नोखा के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र मंगल जी, टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर के कुलपति एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य प्रोफेसर MM सक्सेना जी, वेबिनार के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित जी, वेबिनार के आयोजन की सचिव डॉक्टर अरुणा चक्रवर्ती जी एवं वेबिनार में ऑनलाइन जुड़े हुए देश विदेश के जैव वैज्ञानिक शोधार्थियों और विद्यार्थियों, मुझे खुशी है कि राजकीय डूंगर महाविद्यालय के प्राणिशास्त्र विभाग द्वारा रिसेंट एडवांसेस इन लाइफ साइंस पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो मुझे बताया गया है कि 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेना ही स्वयं इस वेबिनार की सफलता को प्रमाणित करता है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे आशा है कि वेबिनार के मुख्य वक्ता जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर BN पांडे जी, दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की डॉक्टर विनीता शुक्ला जी एवं रणथंभौर के बाघ विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल के जैव विविधता पर दिए जाने वाले व्याख्यानों से निश्चित रूप से युवा शोधार्थियों एवं छात्रों को नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जैसा कि डूंगर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं MS कॉलेज के प्राचार्य ने अभी बात की कि पिछले 6-7 महीनों से वैश्विक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बदल चुकी है। हमारी इकोनॉमी
करीब करीब ध्वस्त हो गई है, केवल एक छोटे से वायरस के कारण। अभी कल ही राजेंद्र पुरोहित जी आए थे हमारे पास और हम लोग चाय पी रहे थे, तो मुझे याद आया कि 1976 में मैंने एक पुस्तक खरीदी थी जिसमें कि बैक्टीरिया क्रिएट करने की बात की गई थी। वो छोटी सी 50-60 पेज की एक पुस्तक थी जिसमें एक वैज्ञानिक ने एक बैक्टीरिया क्रिएट किया जो पानी को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है, उस नॉवेल के हिसाब से। और स्थिति यह हो गई उस नॉवेल में कि आदमी को जीने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि हम स्वयं पानी से बने हुए हैं, हमारे अंदर 70% के आसपास पानी है, और अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया तो हम पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो रिसर्च में एथिक्स चाहिए, उसका जहां पर भी लोगों ने उसको छोड़ दिया है एथिक्स को, वहां पर ही हैवॉक क्रिएट हुआ है। और कोविड-19 जो हमारा कोरोना वायरस है वो इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोगों को अपनी जो लाइफ साइंसेस की रिसर्च है, जो बेसिक साइंसेस, फिजिकल साइंसेस के रिसर्च है, उनमें ये ध्यान रखें कि हम नेचर से खिलवाड़ न करें और नेचर को बदलने का प्रयास न करें, क्योंकि नेचर स्वयं अपने आप इतनी बड़ी लैब है कि वो अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से बदल लेती है। हम साइंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, न कि विध्वंस करने के लिए इस्तेमाल करें। ये मेरा संदेश है। पृथ्वी पर विविध प्रकार की जीवन विकसित हुआ है जो मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता रहा है और आज भी कर रहा है। प्रकृति में अनेक प्रकार के पादप एवं जीव जंतु हैं जो इकोसिस्टम के अनुरूप विकसित हुए हैं और उनका जीवन चक्र भी क्रमिक रूप से चलता रहता है। जैसे ही पर्यावरण में प्रतिकूलता आती है, इकोसिस्टम में बदलाव आने लगता है और जीव जंतुओं और पादपों पर संकट प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि वर्तमान विश्व में अनेक जैव प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और अनेक संकटग्रस्त हैं। आज अनेक विश्व संगठन और सरकारें इनके संरक्षण में प्रयत्नशील हैं। इकोसिस्टम में पादप और जंतुओं में सामंजस्य आवश्यक। कोई भी एक कंपोनेंट यदि विलुप्त हुआ तो संपूर्ण चक्र में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी जंतुओं और पादपों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। बढ़ता हुआ प्रदूषण, शहरीकरण, प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिन पर वैज्ञानिकों को अभी भी शोध करना आवश्यक है। कोरोना के इस काल में हमें बहुत कुछ सिखाया है। यदि हम कोविड-19 से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें सरकारी एडवाइजरी की सख्ती से पालना करनी होगी और प्रदूषण को रोकना होगा। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करें, प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ न करें, वन्य जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्रेम करना सीखें और प्राकृतिक संतुलन में हमें भी हमारी आहुति दें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के जीवन विज्ञान संबंधी वेबिनार के आयोजन से प्रकृति के संरक्षण संबंधी नवीनतम जानकारी युवा शोधार्थियों और हमारे प्यारे विद्यार्थियों को मिल सकेगी। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वीसी सर। Thank you very much, sir. Definitely in ambient guide
guideship and leadership of yours, MGSU will definitely go ahead and will able to produce uh, much more than your expectation and work according to your directions and guidance. Now, I request Dr. Yogendra Singh ji to kindly introduce our guest of honor, Professor M.M. Saxena sir, in front of audience. Dr. Yogendra Singh ji. Yes, sir. Yes, Doctor. Can I audible, sir? Yes, sir. Please continue. Being a core committee member, I feel extremely honored for this opportunity to introduce Professor M.M. Saxena, President and Vice Chancellor of Tantia University, Sri Ganganagar, who is an incredible personality, inspiration of many, and I consider myself very lucky that he was my PhD guide, has been a constant support and instrumental ideal throughout my career in college education. Born on October 1st, 1956, Sir completed his PhD in MSc in zoology with a specialization in environmental biology with a gold medal and his PhD from University of Jodhpur. Sir has held multiple significant positions as former Dean, Faculty of Science, Professor and Head, Department of Environmental Science, Director Research, Controller of Examiner, Chairman, Central Library, Coordinator UGC NET, and Coordinator Self-Finance Courses. Great institutions have strongest pillar. Sir has about 40 years of research and postgraduate teaching and administrative experience while working with Tantia University, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, University of Jodhpur, College Education Rajasthan, and Zoological Survey of India, Research Supervisor of MGS University, Bikaner, MDS University, Ajmer, ML Sukhadia University, Udaipur, IGNOU, New Delhi. Sir has supervised 22 PhD and 26 MPhil scholars. He has published over 150 research papers in the journals of international repute, besides authoring 7 books. The area of his research work has majorly been hydrobiology of Indian desert with particular reference to freshwater sponges, leech, mollusks, periphyton, bioindicators, trophic state indices, pollution ecology, and aquaculture, minorly worked on microbiology like entomology, wildlife, and parasitology. With such wide scope of research, has been the editor of OICO Essay, an international journal of environmental and allied sciences from 1984 to 2011, and been on the advisory board of many journals. Sir has represented over 100 national and international seminar conferences, organized 2 international conferences, undertaken 4 research projects funded by different agencies, has been the resource person and examiner of different universities in environmental science, zoology, fisheries, and allied disciplines. Sir, your work speaks for itself, and you have been awarded by different agencies for contribution to the field of education and environment. Thrice invited to deliver invited lecture at the Indian Science Congress. You have motivated us all by being a living example of kindness and dedicated success. Thank you for being a great teacher and mentor. I hope to achieve and follow your footsteps as much as I can in my journey. I also thank the organizers for giving me this opportunity to express. Thank you, sir. Professor M.M. Saxena sir, kindly unmute yourself, and we are eagerly waiting to listen you. Audible and visible. Yes, sir. Please continue. Okay, thank you.
Thank you very much, Dr. Yogen Singh, for nice words. I don't know all of them, but thank you so much. Chief guest, Professor V.K. Singh, Honorable Vice Chancellor, Maharaja Ganga Singh University. Sir, there is some disturbance in vicinity of yours, either telephone or something. Is it still there? It's partially okay, sir. Okay. Right. Yes, sir. Professor V.K. Singh, Honorable Vice Chancellor, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. An eminent scientist, academician, and a great administrator. Who is heading relatively new university of the state. Dr. Shishir Sharma, guest of honor and my friend, principal, MS College. Dr. G.P. Singh, again a friend of, very close friend of mine, patron of the webinar and principal. Professor Singh is known to be a very good manager, and I feel him as a very good troubleshooter as well. Wherever there is some problem, he is always there to help. So Dungar College is in very, very safe hands. Dr. Meera Srivastava, Head Department of Zoology, Dungar College, Bikaner, my successor. She is having a commendable taskmaster she has been, and unfortunately, and is hospitalized, and we pray for her good health. For about a decade, she had been heading this department, and I am seeing that a number of activities under her leadership have been performed in this department of zoology. Dr. Rajendra Purohit, convener of this webinar. Dr. Purohit is very dynamic and young I always underline because I have been seeing him since his younghood. He is very active. Whenever there are such activities, academic or otherwise, he is always there to support and augment the things in the college and department. Organizing committee of the webinar, I'm not naming people. Invited learned speakers, Professor Pandey, Professor Khandal, Professor Shukla. Guests in this webinar, delegates, and my dear friends. See, whenever there is any program in Department of Zoology and Dungar College, Bikaner, of course, I get nostalgic because this has been a place where I worked for the maximum time. I have lot many friends there. I have lot many memories attached to that college and department as well. So this is always a pleasure for me to be part of any activity of the department and the college. Friends, the topic chosen for the webinar is life sciences research. See, as a student of biology, I feel life science is a very, very vast subject. You cannot limit it. There are a number of branches encompassing number of topics, number of themes, and number of areas. It encompasses research right from virus to banyan tree or to mammoth whales and their processes, their impact, their coordination, and the ecosystem approach as well. Say, for example, if you talk of biotechnology as a branch of life sciences, it again has a very vast scope, right from biogas to molecular biology are covered under biotechnology. Such is the vast scope of life sciences, and I'm sure that in times to come, research in life sciences will only help in sustaining the life on this earth. It is laboratory science, it is a museum science, at the same time it is a field science. And I feel it is more a field science because as you go to field, you learn lot many things relating to life science.
as Professor Singh has mentioned, and at the same time, Professor GP Singh has also mentioned that the time is for multidisciplinary research. We cannot carry out research being in watertight compartments. You'll have to seek help. Even if you are a biologist, you'll have to seek help from statisticians, from physicists, from chemists, and other branches of the different disciplines. Even engineers, you'll have to take help of them. So that approach has to be there. We have to be open to take challenges, at the same time to respect the views of others so far as the research is concerned. What the orientation of a researcher in life sciences has to be, that is often a point when we complete our post-graduation and switch over to research. I feel there are two things very important so far as life science is concerned. One is food and other bioproducts, so as to meet the need of the society. Secondly, disease and medicine, so as to make the life comfortable and increase the longevity. Friends, when we talk of research nowadays, people talk of applied research only, but I feel fundamental research is equally important. Unless you have a fundamental knowledge of a subject, you cannot put it to applied part. So the fundamental research is equally important as applied one. Then the larger things done otherwise. So that has to be there. Now, the problem is we often talk of global issues. Professor Khandal is there. See, I always feel that it is important to look into local situations first. If you are correcting the local problems, global issues are automatically corrected. Whether it is for disease, whether it is for disaster, whether to combat poverty. So we will have to initiate from our own home first and to reach global level thereafter. Friends, our speakers are there to deliberate on different themes, like Professor Pandey, a friend of mine, Professor Khandal, Professor Shukla. They will be giving an insight and oration on the subjects in depth. So I will not stay for long in between you and the learned speakers. Thank you very much, organizers, for giving me this opportunity to be with you. And I convey my best wishes for the success of the webinar. Thank you very much, organizing secretary and the organizing team of the webinar for giving me this opportunity. And I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Professor M.M. Saxena, sir. It's all the time very nice and pleasant to hear you. Thank you very much again. Now, in continuation of this inaugural session, I request Dr. Manisha Agarwal, ma'am, to kindly introduce and invite Dr. Ravindra Mangal, sir, who is also the guest of honor for today's webinar. Dr. Manisha Agarwal, ma'am. Namaskar. Am I audible to all? Yes, ma'am. Please continue. It's my extreme honor to introduce Dr. Ravindra Mangal, sir, our very own known sir, presently holding the post of Principal Government College, Noka. Dr. Mangal, brilliant student from starting, and he's completed his MSc Physics in 1984 with second position. He has awarded his PhD in 2003, 2002 and cleared GATE twice with more than 90 percentile. Sir has research interest in condensed matter physics. 8 students has awarded PhD and 1 is pursuing under his supervision. Sir has published 9 books and 16 research papers and honored many awards to his repute.
Presently, Sir is engaged in interdisciplinary research for developing eco-friendly composites and for economic development of the region, as well as environmentally friendly product with special reference to green chemistry. For this, they have developed a center in college as Bikaner Interdisciplinary Research Consortium. He is engaged in physics learning program, inculcating scientific temper in the society, especially among children, as learning by doing. Sir has started Kalam Learning Center in the college along with other faculty members of the college. Along with many awards and honors, Sir has represented college education thrice in EduHack and awarded by IT Department of India twice. Sir, on behalf of all the organizers and core committee, I welcome you in the national webinar and thank you organizers for giving me this opportunity. Thank you. धन्यवाद मैडम, आपने एक छोटे से व्यक्ति का बहुत बड़ा परिचय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज की सेमिनार के ऑर्गेनाइजर जिन्होंने कि इस कोविड के सिचुएशन में हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर मिलने का मौका दिया। आज के जो रिसेंट एडवांसेस इन लाइफ साइंस के ऊपर जो वेबिनार रखा गया है उसके चीफ गेस्ट प्रोफेसर वीके सिंह साहब, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर एमएम सक्सेना साहब मेरे बड़े भाई हैं और इनसे हमने बहुत सीखा है। एक्चुअल में जितना इनसे सीखा उतना बहुत कम लोगों से सीखने को मिलता है। गेस्ट ऑफ ऑनर मेरे बड़े भाई शिशिर जी, मेरे साथी और मेरे क्लासमेट डॉक्टर जीपी सिंह जी जो प्रिंसिपल डूंगर कॉलेज का काम भी देख रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मीरा सक्सेना, मीरा श्रीवास्तव, दीप्ति मैडम, अरुणा मैडम और मेरे सभी साथियों, और सबसे बड़ी बात जो आज के 3 एमिनेंट स्पीकर हैं जिनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अपने अपने तीनों अलग अलग क्षेत्र के महारत हासिल है, उनसे न केवल डूंगर कॉलेज को बल्कि इंडिया के जो 700 लोग इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उन सभी को आपके द्वारा सुनने का बहुत बहुत मौका मिलेगा। और मैं इस सक्सेस के लिए, इस ग्रैंड सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइजर को, डूंगर कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये ऐसे ही आगे और नए आयाम छूते जाएंगे, इस कोविड के समय में भी सभी को मिलने का मौका देते जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद एक बार पुनः। Sir. Thank you very much, sir. We are really thankful and we hope and wish that blessings provided by you in form of Bikaner Interdisciplinary Research Consortium will definitely flourish, and we will get all the time your directions as well as blessings. Now I invite Dr. Meera Shrivastava madam, who has been the chairperson of this webinar, but as you know, unfortunately, she is hospitalized and she will be leaving from the hospital itself. She is the COVID patient. She is having 30 years of research and teaching experience, produced 17 PhDs and 25 Phils, participated in more than 100 conferences throughout the globe and published more than publications, research papers in different journals. I request Dr. Meera Shrivastava to kindly guide us at this moment. Dr. Meera Shrivastava. Good day, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Perfectly audible. Good day, Honorable Vice Chancellor, Professor V.K. Singh, MGS University, Bikaner. Honorable Vice Chancellor, M.M. Saxena, sir, Tantia University, Sri Ganganagar.
Just by naming these two here, I feel डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में the webinar which we initiated is partly towards success because we are being blessed by two vice chancellors. Continuing further, guest of honor, Dr. Shishma, guest of honor, Dr. Ravindra Mangal sir, patron of the college, who is the pillar and who's been supportive throughout in organizing of this webinar, Professor G.P. Singh ji, all the members of the organizing committee, right from the convener, Dr. Rajendra Purohit, coordinator, Dr. Deepti Srivastav, organizing secretary, Dr. Aruna Chakravarti, the core committee, Dr. Narendra Bhojak, Dr. Suresh Verma, Dr. Hemendra Bhandari, Dr. Pratap Singh, and every single member of the college faculty who is always so supportive, and the members of my department who just as soon as I conceived the idea, actually it was just 15 days back, we had organized a international webinar on radiation therapy towards COVID. And when I conceived this in on advances in life sciences, I was fit and fine. But right now, as Professor M. Saxena has just said, I'm hospitalized, and who none other than me can actually see what is the scenario today of the COVID, what it has affected. And I'm undergoing the same treatment for COVID here in Santokpa Dullabji at Jaipur. So as soon as I conceived this idea, I was fit, and my faculty members, just at a single word, I said we would like to organize a webinar on researchers in life sciences, and everyone joined hand within a moment and stood as pillars that we are all there, and we would help you in every single way. And we conceptualized and have conceived this, and today it is on this platform that we have our eminent speakers, and it is being supported by the members. Maybe I may not be able to name all of them because, but I'll try to. That Dr. Anu Sharma, Dr. Anand Khatri, Dr. Yogendra ji, Dr. Narendra Singh, Dr. Balram ji, Dr. Mahendra Solanki, Dr. Harbhajan Kaur, Aruna Chakravarti, Manisha Agarwal, each and every member, they have been so helpful in organization of this event. And the speakers, Professor Vinita Shukla ma'am, Professor Kondal, Professor Pandey. Thank you so much, sir, that just at a single request of us, you came forward and ready to speak on the various dimensions which are really important. And we really need them today for the service of the society, that whatever advances are there, they should come to the benefit of the society in a very proper and ethical way, because ethics is very important. We are exploiting nature indiscriminately, and this exploitation has to be very judiciously done so that the world doesn't face such issues in future, and we come out safely at what we are today. So at this juncture, I wish to say that I am very proud to be a chairperson as a head of the Department of Zoology, Government Dunga College, Bikaner. We've always taken good steps to pursue academic excellence, may it be in teaching, may it be in research. We always organize such academic events so that the society is benefited. And this one also, we expect that the deliberations throughout this webinar would be fruitful, and we come out with significant contribution to the society. I would once again thank each and every member of the college, of the organizing committee, associated directly or indirectly for the organizing of this webinar. I won't be able to speak a lot. Thank you so much for giving me this opportunity, and I'm be able to talk and to you all on this platform via this Google Meet. Thank you. Thank you.
Thank you, Dr. Meera Srivastava, madam. I think you must take care of yourself more than this. I request Dr. Shalini Mulchandani, madam, to convey official vote of thanks as a co-patron of this webinar. Dr. Shalini Mulchandani, madam. As you can see, Dr. Meera Srivastava is not only in the hospital, but she is almost sleeping on the bed. I request Dr. Shalini Mulchandani, ma'am. Dr. Shalini Mulchandani, madam, kindly unmute yourself and then proceed. I think there is some network issue with Dr. Shalini Mulchandani, madam, but she is there. I request Dr. Shalini Mulchandani, madam, kindly unmute yourself and then proceed. हाँ मैडम, शालिनी मैडम सुन पा रहे हैं हम सभी को आप? शालिनी मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए आप। शालिनी मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए आप। डॉक्टर शालिनी मैडम। I think still there is some network issue with Dr. Shalini Mulchandani, madam. May I request Dr. R.K. Purohit, sir? शालिनी मैडम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शालिनी मैडम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? Anyway, now I request Dr. R.K. Purohit to conclude this session with vote of thanks and proceed for further technical sessions. Dr. R.K. Purohit, sir, kindly unmute yourself and then proceed. Okay. Am I audible? Sir, please unmute yourself. Yeah, unmuted. No, you please unmute. Unmuted. Yes. Yes, please. Thank you, Dr. Bhojak. Thank you, Dr. Bhojak. Dr. Shalini madam, she was supposed to deliver vote of thanks. Unfortunately, she did not connect due to some technical problem. Shalini madam, I on she was supposed to deliver behalf vote of of
the organizing committee. I thank you, our principal. I thank you, our Dr. principal, GP Singh ji, Dr. GP Singh ji, the guest of honor, Professor Abdul Saxena sir, the guest of honor, Sasi Sharma sir, Professor Abdul Saxena, Dr. Ravindra Mangal sir. Of course, I am thankful to our Honorable Vice Chancellor, Professor V.K. Singh ji, for sparing his valuable time and for blessing all of us. I thank all the members of organizing committee, especially I thank our secretary, Dr. Alok Continue for blessings to all of us. Thank you very much. Dr. Bhujan, Dr. Kayaswamy, Dr. Hemant Bandari, shortage of time. Once again, I thank you all. We are going to start our new session. Dr. Shalini madam, can you hear us? Madam, please unmute yourself. Please unmute yourself. Unmute नहीं होगा उनका क्या? हाँ मैडम, हाँ अब बोलिए मैडम. I think there is some problem with your speaker also. आवाज ही नहीं आ रही. Your speaker is not working. So we are not getting your audio. I think you have not made compatible your audio with the Zoom system. This is why this problem has arisen. When you are logging with Zoom, so there Zoom is asking to use your audio. I think you have not allowed that. No, Yes. Okay then. we cannot wait for now. Let us go for the next session. Okay, Doctor. Now we hand over this Dr. R.K. Purohit to for next session. Thank you, Dr. Bhojak. Now we proceed for the session first. We have three speakers with us. The first speaker, Dr. B.N. Pandey sir, then Dr. Dharmendra Khandal sahab, and Dr. Vinta Shukla. First of all, Dr. Pandey is here. Dr. B.N. Pandey sir. Dr. B.N. Pandey sir. Yes, he's here. Hello, I am here. Thank you. Welcome, sir. Welcome. Hi, thank you. I would request Dr. Leena Saran, if she is here, and Dr. Kailash Swamy, Dr. K.K. Swamy, he would introduce Dr. B.N. Pandey sir. Dr. Kailash Swamy, our senior faculty member, associate professor. Sir, we will take only 2 minutes. He would like to introduce Dr. Kailash Swamy. Dr. K.K. Swamy, you may come, you may go there. Dr. K.K. Swamy. Yeah. Kindly introduce Dr. B.N. Pandey. Good morning to all of you. Myself, Dr. Kailash Kumar Swamy, Associate Professor, Department of Zoology, Government Dunga College, Bikaner. It is a matter of immense pleasure to me introducing to Professor B.N. Pandey. He has completed his 40 years journey of academician and researcher in 2008 from Department of Zoology, Magadha University, Bodh Gaya. Professor Pandey is a compendium of kindness and masterpiece in his profession. About 42 scholars have been awarded PhD under his supervision, and more than 200 research papers have been published and cited
in national and international journals, books with high impact factor. Extract of his dedication reflect in form of 70 books of the society. Among these, 5 books being the process of editing. He was awarded as International Man of the Year from 96 to 99 by International Biographical Center of Cambridge, England. The list of his contribution and awards is so long, so I briefly summarize that he was honored by Tata Gold Medal, Eminent Indian Zoologist Medal, Best Scientist of the Year 2003, ABI Gold Medal, 2000 Millennium Medal. He is also honored by Rajiv Gandhi Shiromani Award. Professor Pandey was engaged in various research projects and seminars which flourished and funded by DST, CSIR, UGC, etc. As resource person, he was witness of many national and international conferences organized by various countries. He is also member of advisory board of Flora and Fauna, an international research journal of biological science. At present, Dr. Pandey, working as President of Zoological Society of India. I again welcome Professor B.N. Pandey in this national webinar organized by Department of Zoology, Government Dunga College, Bikaner. I hope all participants will be benefited with his research experience, which make the day unforgettable one. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kailas, for introducing Dr. Pandey. Yeah. Now, I would request Dr. B.N. Pandey to deliver his talk on biodiversity for human welfare. Dr. B.N. Pandey. Welcome, sir. Before I start my talk, I would like to thank Honorable Vice Chancellor and today's chief guest, Professor V.K. Singh Sahab, another Vice Chancellor, Professor M.M. Saxena Sahab, Principal of the College, Professor G.P. Singh and Shishir Sharma Sahab, and the dynamic convener of this seminar, Dr. Rajendra Kumar Purohit ji, students, staff of this college, delegates, teachers, ladies and gentlemen. I am really very happy to be amongst you to deliver my talk on a very important issue. Friend, I start with the word biodiversity. If you go to the old dictionary before 1980, you won't find this word in dictionary because it is for the first time in the year 1980, a scientist known as Lover Joy, he actually coined this term. और जब ये बायोडाइवर्सिटी टर्म उन्होंने क्वाइन कर दिया तो आप सोचिए कि जितने भी सेमिनार हो रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, it became the catchword और हर सेमिनार सिंपोजियम में people started talking about the biodiversity. But friend, one thing is very important. How can we correctly define the biodiversity? In simple word, we can say all the life form on this earth, right from microbes to mammal, the gene they contain and the habitat they inhabit, this all collectively we call the biodiversity. Now the question is, what is the number of biodiversity in the world? अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो आज से हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे धार्मिक ग्रंथ में इस बात का जिक्र है 84 लाख योनि। 84 लाख योनि मीन्स 84 लाख स्पीसीज। तो जिस जमाने में ये ग्रंथ लिखी गई थी उस जमाने में निश्चित रूप से इट वाज द करेक्ट फिगर। आज के युग में साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ काफी माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई है और ये संख्या अब बहुत अधिक है एज कंपेयर टू 84 लाख। लेकिन मैं जब यहाँ चर्चा करूंगा तो 84 लाख -1 मीन्स हम आदमी ह्यूमन बींग्स को अलग कर रहे हैं और जो रेस्ट बायोडाइवर्स फॉर्म है उनको हम अलग कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, ये बायोडाइवर्स फॉर्म, ये 84 लाख -1 जोनी 210 कंट्री के 24 इकोसिस्टम में बड़े प्यार मोहब्बत से आपसी सद्भाव के साथ अपने बीवी बच्चे के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और वहां किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, न कोई आतंकवाद है, न माओवाद है, न किसी तरह का और कन्फ्लिक्ट है। तो ये जो बायोडाइवर्स फॉर्म है, ये एक मैसेज हम लोगों को दे रहे हैं कि देखो, अगर हम लोग 210 कंट्री के 24 इकोसिस्टम में बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो हे मानवो, क्या आप इस ग्लोब पर हमारे तरह से प्यार मोहब्बत के साथ नहीं रह सकते हैं? और जो कंसेप्ट आपका है वसुधैव कुटुंबकम, आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रख करके आप हमारे तरह प्यार मोहब्बत से रहिए और इस धरती पर आतंकवाद, माओवाद या और भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ए मैसेज बीइंग गिवन बाय द लाइफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मित्रों, हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार से हम लोग स्टडी कर सकते हैं: स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड रूप में इस बायोडाइवर्सिटी पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मनुष्य के जीवन में 3 आवश्यकताएं इंपॉर्टेंट हैं: फूड, भोजन, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज की जरूरत है। तो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो 20,000 से भी अधिक प्रकार के टेबल्स हैं, लेकिन हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ 1 दर्जन क्रॉप्स पर। चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इस तरह से करके वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन ओनली a dozen of crops, which is not good, क्योंकि अभी तो ठीक हमारा काम चल रहा है, लेकिन 2041 में जाकर के बहुत ज्यादा एक्यूट फूड शॉर्टेज होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो अदर लाइफ फॉर्म्स हैं, 20,000 में से जो टेबल्स हैं, हम उसके तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं, कभी 20-21 बरस का समय है, वो समय 2041 आने के पहले आप ये सभी जो लाइफ फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट लाइफ फॉर्म्स हैं विच आर कंसर्न विथ आवर फूड सिक्योरिटी, आप उनके भी सीड के प्रोपेगेशन पर, सीड कंजर्वेशन पर और सीड के जेनेटिक इंप्रूवमेंट आदि पर चर्चा करें, क्योंकि आने वाले समय में जब हमें खाद्यान्न की कमी होगी तो हम अपने खाद्यान्न की आपूर्ति जो रिमेनिंग बायोडाइवर्स फॉर्म है फॉर फूड सिक्योरिटी, उनसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आवें तो हम लोगों को दूध है, अंडा है, मांस है, ये सभी हम लोगों को, घी है, दही है, मक्खन है, ये सारे चीज हम लोगों को एनिमल फॉर्म से ही मिल रहे हैं मित्रों। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये हार्डली 4-5-6 एनिमल से हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो लगभग 9,000 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स हैं, 4,000 वेराइटीज ऑफ मेमल्स हैं। लेकिन आउट ऑफ दिस 13,000 फॉर्म्स, बर्ड्स एंड मेमल्स, हम लोग सिर्फ 5-6-7 एनिमल्स से मीट ले रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, विच इज नॉट गुड। हम लोगों को अदर लाइफ फॉर्म्स, जिससे कि हम लोगों को अदर ये इस तरह के पौष्टिक तत्व मिल सकते हैं, हम लोग उस पर भी ध्यान दें। तो ये पहला हमारा मैसेज है कि बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। हमारे एक ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कहा था कि ईश्वर ने मनुष्य पर बड़ी कृपा की है। इस धरती पर आने के पहले उन्होंने मनुष्य के जरूरत की जितनी भी चीजें थी उसका निर्माण पहले किया, ताकि मनुष्य को धरती पर आने के बाद किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। मित्रों, जब ईश्वर ने इतना ख्याल रखा है तो हमको भी ख्याल रखना है कि जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, हम सब उसके साथ सद्भाव, प्रेम का भावना रखें और जीने का कंसेप्ट रखें, ताकि हम लोग एक दूसरे के पूरक होकर के एक दूसरे के हम लोग काम आ सकें। तो पहला मैसेज ये था कि बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। दूसरा आइए, बायोडाइवर्सिटी फॉर क्लोथ्स। आप देखेंगे
कॉटन है, जूट है, उलन है, इस तरह के बहुत से ऐसे यार्न्स हैं which we are getting from the biodiverse form. तो बायोडाइवर्सिटी का रोल जो है फूड सिक्योरिटी के बाद दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग अस विद द क्लोथ्स। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हाउसिंग। अगर आप एंशियंट टाइम में जाएं तो जितने भी घर बनते थे वो बम्बूज से बनते थे, वुड से बनते थे, पत्तियों से बनते थे, और उस समय लोग निरोग रहते थे क्योंकि पर्यावरण के साथ रहते थे, पर्यावरण में रहते थे, वो निरोग रहते थे और उनका हेल्थ और हर तरह से बिल्कुल वो सुखी संबंध रहते थे। मित्रों, आज तो हम लोगों ने बड़े बड़े घर जरूर बना लिए, लेकिन हमको वो कंफर्ट नहीं है। और आप देखेंगे जो संपन्न आदमी है वो अपने एक छोटे से हट को भी कहीं कहीं जहां उनका फार्मिंग हाउस है वहां एक छोटे हट को बना करके जो इको फ्रेंडली है उसमें रहना वो पसंद करते हैं। तो मित्रों, ये बायोडाइवर्स फार्म जो है इसने हमारी भोजन की समस्या का समाधान किया, हाउसिंग की समस्या का समाधान किया, क्लोथिंग की समस्या का समाधान किया। अब अगर नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम लोग आवे तो आप देखेंगे इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी। मित्रों, अगर आयुर्वेद की बात हम लें तो 10,000 से भी ज्यादा तरह के प्लांट्स हैं which are being used for the treatment of different types of diseases. आप देखेंगे आज के समय में जब एलोपैथिक मेडिसिन जो काफी रिएक्शन करने लगा, लोगों को साइड रिएक्शंस काफी होने लगे, तो पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड द नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। और आज की तारीख में अगर आप ट्राइब्स की बात ले लें, आदिवासी की बात ले लें, तो 95% आदिवासी वे कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और वो डिफरेंट तरह के प्लांट और एनिमल्स के कॉम्बिनेशन से शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों का वो इलाज करते हैं। सो जो मेडिसिन है, जो हेल्थ सिक्योरिटी है, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट लाइफ फॉर्म। आप पेंसिलिन है या एंटीबायोटिक्स, इस तरह की जितने भी आप मेडिसिन देख रहे हैं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, ये बिल्कुल ये लाइफ बायोडाइवर्स फॉर्म से ही आ रहे हैं। So actually health security. Now next come to the biodiversity energy security. चूंकि एनर्जी आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 367 टाइप्स ऑफ पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं जिससे विभिन्न प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आज अलगी से और डिफरेंट तरह के इस तरह के प्लांट से हम लोग मिथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमारी एनर्जी की समस्या आजकल वी आर टॉकिंग अबाउट इको फ्रेंडली। हम लोग अब कह रहे हैं कि साहब बायोफ्यूल के लाओ क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं करता है। तो हम लोग को अब समय आ गया है जबकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हम लोगों को बायोडाइवर्स फॉर्म अलगी पर निर्भर करना पड़ेगा। और इसके साथ साइड बाय साइड हम लोग अब सोलर एनर्जी का भी उपयोग कर रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो बायोडाइवर्स फॉर्म है ये हमारे बिल्कुल हेल्थ सिक्योरिटी के अलावा एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात करता है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप पुराने जमाने की बात करें जिसमें ये कार मोटर ये सब चीजें विकसित नहीं थी, उस समय लोग क्या करते थे कि बैल का उपयोग, भैंसे का उपयोग, गधे का उपयोग, कैमल का उपयोग, हाथी का उपयोग, ये डिफरेंट तरह के ये ट्रांसपोर्टेशन के साधन हमारे बने रहते थे। और आज भी की तारीख में भी अगर देहात की बात आप करें तो देहात में ये काफी प्रचलित है और ये इंपॉर्टेंट साधन आज भी ट्रांसपोर्टेशन का है। मित्रों, आदमी तो यूज कर ही रहा है ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। अगर हम लोग देवी देवता की बात करें तो जो डिफरेंट एनिमल राइट्स हैं ये हमारे देवी देवता को बड़ा पसंद था। जैसे माँ दुर्गा की सवारी क्या थी? सिंह थी। हमारे शंकर भगवान की सवारी नंदी थी। इसी तरह से ब्रह्मा जी की सवारी है, उनका भी किसी का बत्तख है, किसी का हंस है, किसी का मोर है। और गणेश जी का सवारी चूहा है आप देखेंगे। और जो हमारे महाकाल हैं उनकी सवारी भैंस है। तो डिफरेंट तरह के जो हमारे देवी देवता हैं इनको भी ये बहुत प्रिय हैं लाइफ फॉर्म्स। और पुराने जमाने की बात आप करेंगे जिसमें कि ये डाक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ नहीं थी,
तो लोग कहते हैं कबूतर के पैर में लोग चिट्ठी बांध देते थे और डाकिया का काम कबूतर करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मैसेज पहुंचाने का काम भी करता था। मित्रों, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। आदमी पर विश्वास नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ पेट एनिमल्स रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, तोता रखते हैं। इस तरह के बहुत से एनिमल्स को हम लोग पेट एनिमल्स के रूप में यूज करते हैं, ताकि हम लोगों के घर की रखवाली हो सके और लोग खूब आसानी से घर से बाहर जा सकें और ये हमारे घर की रखवाली करते रहते हैं। मित्रों, इन सब के बावजूद सब हमको चाहिए लाइवलीहुड, आजीविका चाहिए। तो बायोडाइवर्स फॉर्म की बात अगर हम करें तो जो डिफरेंट तरह के हमारे कल्चर सिस्टम है, पीसी कल्चर है, एक्वा कल्चर है, एपी कल्चर है, लैक कल्चर है, सेरी कल्चर है, ऊल कल्चर है, पोल्ट्री कल्चर है, पता नहीं कितने प्रकार, कंपोजिट फिश फार्मिंग है, सीवेज फेड फिशरीज है। इस तरह से करके जितने भी पर्ल कल्चर है, आप देखेंगे अगर सारे कल्चर्स को हम लोग मिला दें तो लगभग 3 अरब लोग पूरे विश्व में इसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये बायोडाइवर्स फॉर्म जो है ये हमारे लिए जीविका का भी साधन है, लाइफ सिक्योरिटी की भी बात के अलावा हम लोग लाइवलीहुड भी हम लोग इससे प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से जगह हैं विच इज रिच इन बायोडाइवर्स फॉर्म। आप विषुवत रेखा का नाम सुने हैं, इक्वेटर का नाम, और इक्वेटर के दोनों तरफ आप 20 डिग्री नॉर्थ जाएं, 20 डिग्री साउथ जाएं, आप देखेंगे दे आर द रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ द क्लाइमेट इज सो कंजीनियल कि बायोडाइवर्स फॉर्म इसमें काफी प्रोपगेट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाया गया है। मित्रों, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो इनका नुकसान हो रहा है, बहुत से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स के लिए मैन मेड है, हम लोग जरूरत से ज्यादा हर्बल प्लांट्स का यूज कर लेते हैं, हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है। इस तरह से करके बहुत सी समस्या जो है हम लोग उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करके हम लोग बायोडाइवर्स फॉर्म को नुकसान कर रहे हैं। मित्रों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि बायोडाइवर्स फॉर्म तो बिना आदमी के रह सकता है, लेकिन मानव 1 सेकंड भी बिना बायोडाइवर्स फॉर्म के जिंदा नहीं रह सकता है। हमको उनकी आवश्यकता है, बायोडाइवर्सिटी को हमारी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं फिर आगाह करता हूं कि आप बायोडाइवर्स फॉर्म के प्रति सम्मान रखें, उनका आदर रखें, उनका प्रोपगेट करें। और मित्रों, बायोडाइवर्स में अगर 84 लाख योनि है तो न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। आप अगर कहें कि मेन सुपर्ब है, मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि आज एक कोरोना एक वायरस है, छोटा सा पार्टिकल है, उसने सारे साइंस को, सारे सुपर पावर को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है। और जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे इकोसिस्टम को भी मैनेज करते हैं। अगर माइक्रोब्स नहीं रहेंगे तो हमारे इकोसिस्टम कभी हेल्दी नहीं रहेगा, हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों, इस संसार में न कोई छोटा है न बड़ा है। अगर माइक्रोब्स हैं वो भी वही रेस्पेक्ट खोजता है जो हमारे मनुष्य लोग खोज रहे हैं, जो मेवल जाति के लोग खोजते हैं। तो वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी बायोडाइवर्स फॉर्म राइट फ्रॉम द माइक्रोब्स अप टू द अपर फॉर्म। नेक्स्ट अगर बात करें मित्रों, बायोडाइवर्सिटी, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। हम लोग डिफरेंट नेशनल पार्क में जाते हैं, हम लोग वहाँ डिफरेंट तरह के लाइफ फॉर्म्स को देखना चाहते हैं। हम लोग कभी कभी जब राजा महाराजा बहुत खुश मिजाज रहते थे तो रानी के साथ बैठते थे और वो मछली पकड़ने का काम करते थे, जो रिक्रिएशन का काम हो रहा था। तो जो बायोडाइवर्स फॉर्म है वो हमारे लिए रिक्रिएशन का भी काम करते हैं। और खास करके हम लोग जो इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म को हम लोग बिल्कुल अभी काफी ज्यादा पनपा रहे हैं और उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम है, आप अगर बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो 1 सिलेंडर आपको 1000 रुपए में मिलेगा ऑक्सीजन का। लेकिन आप देखिए कि इतने बड़े करीब करीब
7.5 अरब लोगों को ये जो प्लांट है ये ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है, ये पानी फ्री में दे रहा है, इरिगेशन की सुविधा है, एनर्जी फ्री में दे रहा है। देयर आर सो मेनी सच थिंग्स। आपको फ्री हर्बल प्लांट देकर के आपके हेल्थ को सिक्योर कर रहा है। तो मित्रों, ये जो बायोडाइवर्स फॉर्म है ये हर तरह से हम लोग का जो भी जीवन है ये बिल्कुल बायोडाइवर्स फॉर्म आधारित है। और अब कंसेप्ट भी आ गया है जीन बैंक का, कि जीन बैंक हम लोग जितने भी हमारे लाइफ फॉर्म्स हैं उसको कंजर्व करना है, जीन बैंक के रूप में रखना है, क्योंकि कोई भी लाइफ फॉर्म धरती का वो बेकार नहीं है और वो हमारे मानव जीवन के कल्याणकारी है। मित्रों, मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी देश अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपरली मैनेज कर ले, मेंटेन कर ले, तो उस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। आप इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं, भाईचारे का संबंध भी बना रहेगा। तो मित्रों, जो मैसेज हमारे बायोडाइवर्सिटी ने दिया है कि साहब जिस तरह से हम लोग 210 कंट्री के 24 इकोसिस्टम में भाईचारा के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, आप भी उसी तरह से हमारा अनुसरण करें। और मैं आपके लिए हर तरह से सहायक हूं और हमको भी आप नीच मत समझें। हमारी भी भावना, हम आपके सेवक हैं, हम आपके काम की चीज हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं फॉर द पेशेंट हियरिंग। और इस कोविड युग में भी जब लॉकडाउन चल रहा है, ये बायोडाइवर्स फॉर्म, ये डिफरेंट कल्चर सिस्टम है, ये डिफरेंट तरह से हम लोग हमारी मदद कर सकते हैं और इसको हम लोग काफी विकसित करके अपने जीवन को हम खुशहाल बना सकते हैं। हम लाइफ फॉर्म के जरिए पैसा कमा सकते हैं और हर तरह से इसके अलावे भी बहुत से आयाम हैं। सब तो डिस्कस करना इस छोटे समय में मुश्किल है, लेकिन इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैंने एक अपना व्यू आपके सामने रखा कि बायोडाइवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और हम लोग इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंट हियरिंग। बहुत बहुत आभार डॉक्टर BN पांडे साहब। निश्चित रूप से जो बायोडाइवर्सिटी के आपने कुछ कंसेप्ट बताए हैं, हम सभी के लिए, खासतौर से युवा शोधार्थियों के लिए एक नया आयाम स्थापित करेंगे। मुझे आशा है भविष्य में भी जब कभी आपकी जरूरत पड़ेगी, आपका सेवा चाहिएगा, आप हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर BN पांडे साहब। May I speak, Dr. Pratap Singh? Dr. Pratap is here. Dr. Pratap, can you hear me? Dr. Pratap, please unmute yourself. Dr. Pratap Singh, you please unmute yourself. Yes, now I'm able to unmute myself. It was the host. Okay, Dr. Pratap, I request you to introduce our next speaker, Dr. Dharmendra Khandal. Dr. Pratap Singh. Okay, thank you very much, Dr. Purohit. After bird's eye view about the biodiversity of the country or the world, now we'll be listening to a very in-depth lecture about biodiversity of Rajasthan from Dr. Dharmendra Khandal. And it gives me immense pleasure to introduce Dr. Dharmendra Khandal. He is a well-known figure among wildlife researchers and conservationists. Dr. Khandal is a conservation biologist working since 2003 with Ranthambore-based NGO Tiger Reserve, and this NGO was founded by the legendary late Mr. Fateh Singh Rathore, who was field director of Ranthambore National Park also. The role of Mr. Fateh Singh Rathore and Kailash Sankla in conservation of tigers particularly is not hidden. Everyone knows how much they have contributed for their survival in India. Dr. Khandal is PhD in wetland ecology and is passionate about exploration of diversity in spiders, snakes, and megafauna. His work in Tiger Watch has been anti-poaching,
monitoring, and research around Ranthambore Tiger Reserve. He has spearheaded the iconic anti-poaching project since 2005, which has led to the arrest of more than 130 poachers around Ranthambore Tiger Reserve. In 2006, he was instrumental in setting up a holistic Mogya tribe reform program, which included free healthcare, education for the families to encourage them to give up poaching and take up mainstream life. He has also involved 50 youths of Gurjar community in the direct conservation process, and the program is known as Village Wildlife Volunteers Program. And this program has been hugely successful in and around Ranthambore National Park. He has written several books, research publications for various national and international journals and magazines. We are lucky to have him with us. He will be speaking about the biodiversity of Rajasthan and its conservation needs. If we talk about the biodiversity, India is one of the top 12 mega diversity regions of the world. And Rajasthan state is often known as desert state, as more than 60% of its geographic area is desertic. This largest state of Indian Union holds 5.5% of country's population. In spite of hostile climatic conditions, the state is very rich in its biological diversity. The faunal richness of the state encompasses 140 fish species, 14 amphibian species, 67 reptile species, 8 of which are endangered, nearly 500 bird species, 6 of which are critically endangered, 5 endangered, 12 vulnerable, and 19 near threatened. 87 species of mammal, out of which 7 are endangered. This vast landscape is bestowed with rich biodiversity, and sacrificing life is a tradition of the land. Whether it's a battlefield of Haldi Ghati or Amrita Devi of Khejarli village. Like any other region of the country, Rajasthan is also witnessing threats to the biodiversity, and there can be no other person better than Dr. Dharmender Khandal, who has traversed every nook and corner of the state while studying its faunal heritage. Please give your full attention to Dr. Dharmender for his talk on biodiversity of Rajasthan. Dr. Dharmender Khandal, please. Thank you, Pratapji, for introducing me and broadcasting this webinar. Good afternoon to the Excellencies and Vice Chancellor, sir, teachers, and my friends. Myself, Dharmender Khandal, I am based at Ranthambore, near a tiger reserve. Ranthambore is a famous tiger reserve in the world because tiger sighting is very, very easy in this dry, deciduous landscape of Aravalli. Basically, this is meeting point of Aravalli and Vindhyan Hill system. But this is the driest tiger habitat in the world. So tourism is one of the very popular in this area. Tiger tourism, tiger safari is also very popular. And then because this is the easy sighting of tigers happen in this area, so poaching is also very, very rampant because it's easy to see all kind of wildlife. I joined Ranthambore in 2003, but my main interest is smaller faunal groups like spiders and snakes and other things. My MSc is in botany, but I'm more interested in zoological aspect of life. And I always getting good guidance from my friends like Pratapji and then other people. So I have a presentation. I would like to share my screen. And I'll start my presentation here.
Can you see my presentation? Not yet, Dr. Khandal. Can you It's see visible. now? Yeah, it's visible now. Yeah. Yes, So please basically- make it full screen, sir. Make it full screen. Slideshow. Now it's fine. Yes, it's fine, sir. Okay. Please continue. So Rajasthan, we can divide into two parts. As we know, western part is the desert part where 11 districts mainly covers this area. And then the in between this kite-shaped state is the largest state now after Madhya Pradesh divided into many parts. Then Aravalli is, but if you see the most protected areas are mostly in the eastern part or southeastern part of the state. We have two protected areas. Protected area means sanctuary and national parks. So we have around 25 sanctuaries and 2, 3, 4 national parks and multiple conservation reserves and community reserves. So two major protected areas in desert are Tal Chapar, which is a very small, minuscule kind of small sanctuary, which is around 5-6 square kilometer area. And the Jaisalmer is the highest, the biggest protected area in the country, can say 3,000 square kilometer area, but there are several villages in this area and facing huge, enormous biotic pressure. Desert is not very diverse as we feel that, but it has many unique faunal and floral aspects. But as you know, this desert is the reason to give this country a very unique, very unique biodiversity center. This is not allowed to enter many species come to the mainland of India. This is stopping. This is the barrier between the Arabian region and the Indian peninsula. On the north, the cold desert is stopping. In the west, this is the main reason. So there, India has assemblage of diversity from various areas, like from Malayan region, from Arabian region, Arabia, Saharan region, then north side of the country, China and the Siberia. But still, you can say we have many unique species. Those are coming, migrating in this area. Can you identify what is this? This is salt pans of Tal Chapar. You can see hoof marks of blue bulls roaming in this, and these green, yellow, brown forms are the salt and algae and in open salt pans. This is a drone picture. So there are many unique features in this country. Ranthambore is one of them, where there are 3 tiger reserves now. Ranthambore is one of the tiger reserve, then Sariska is another tiger reserve, Mukundra Hill Tiger Reserve recently notified by the Forest Department. We have many interesting features like Vindhyan Hill System, which is a tabletop of hill system, rocky strata, many revolutes in this area, and then they make big gorges. These gorges are unique areas of biodiversity. Ravines is another kind of habitat, like mangrove is neglected by the government, still is a neglected kind of ecosystem in this country. Similarly, ravines in this country is considered as a wasteland. There is a wasteland board. They are spending crores of rupees to reclaim these areas and converting these areas into agricultural land. These areas are very important for the habitat for
many small species. Small species in the sense like species like small cats, badgers, civets, wolves, hyenas, all these species. So I will focus my talk on the faunal diversity and especially on the mammal diversity of this area. And I'll also discuss a little bit about the reptiles and birds. So recently, our friend and guru, Mr. Dr. S.K. Sarma, Satish Kumar Sarma, documented that in this state we have around 97 mammals. This is the old figure that we have 76 or around 75 mammal species. The recent figure is 97, which is 2-3 less in 100, so almost century, and similar, almost similar number of reptiles. And there are many opportunity to find new reptiles, especially lizards. So it may increase sooner or later. And then birds. There are various figures that around 600 birds, but at least right now I have a figure of 575 authentic figure of this number. Then frogs, then fishes. Frogs we have 15, fishes we have 168, butterflies around 120, and spiders, 100 plus spiders must have in this state. Mammals, half of the mammals are bats and rats. Basically, around 27 bats we have in this state and around 23 or 22 rat or mouse we have in this state. Every species needs some kind of habitat. Like for a tiger, it is saying that at least 80 to 100 tigers should be in a one population. Like Ranthambore, right now we have 60 to 65 tigers in one chunk of this forest. But a viable population, to achieve the goal of viable population, we must have 80 to 100 tigers. But to achieve this goal, to keep 80 to 100 tigers, we should have at least 800 to 1000 square kilometer area inviolate. Inviolate means no other hurdles. Like sometime in Ranthambore is, for example, Ranthambore has 1700 square kilometer area under the reserve, but we have only 60 tigers, 65 tigers, because most of the area is facing huge biotic pressure. In the tiger reserve, we have around 5,000 people. Can you imagine that? We have around 65 villages inside the tiger reserve. And that's why only 65 tigers can hold this tiger reserve. Tiger is a very beautiful animal, is also in our mythological stories, in our culture, is a part of our life. But it is why it is important to save tigers. Saying that India is paying huge price to manage this animal. Huge price means not only the money, monetary, not the economical loss to save this animal. We are at least, the tigers are killing at least 50 to 100 people every year in this country. Only India can afford such kind of loss. Our elephants are killing 300 to 400 people every year. If such thing happen in any European or American country, they would kill all such dangerous animals. But India is a great country, so we are giving space to such difficult animals. But why we are saving this animal? Because tiger lives in 50 different tiger reserves. And these 50 tiger reserves are essential for food and water security of this country. These 50 tiger reserves are producing at least 500 to 600 different rivers and rivulets.
Revolutes means small rivers. Like Ranthambore. Once I asked one of my forest officer friend that how many dams we have around Ranthambore, those are getting water from the landscape of Ranthambore. They say we have 1 or 2. But friends, I started counting with help of the local irrigation department, and I made a list of 19 dams. These 19 dams are getting water from the catchment of Ranthambore. And these 19 dams are fulfilling water requirement of 250 villages. And if you calculate the grain production of these 250 villages, it is more than 500 crore rupees. So this one tiger reserve is irrigating at least 250 villages. Just take an example of Ramgarh. Ramgarh, which is very close to Jaipur. So now Jaipur is getting water from Bisalpur. So most of the water comes in Bisalpur is coming from Kumbhalgarh area and the adjoining hill areas of Jasmine and Pali area. So Jaipur must be 200 kilometers from Jasmine and Pali and still getting water from Kumbhalgarh. But earlier, Jaipur was managing its water requirement from Ramgarh Lake. I remember in 1982 when Asiad happened, one of the kind of boating competition happened there. But now this is the dry lake and full of juliflora. So tigers are essential to maintain such important habitats. Otherwise, we will lose all our habitats like Ramgarh is now finished. Before Ramgarh, we finished Kukas Dam, and now we are fully dependent on Bisalpur. And sooner or later, Jaipur will face water crisis. So tiger is a very, very important animal to maintain such kind of habitats. There are very interesting aspects of tiger's ecology, but I will not discuss here. I will discuss the basic aspects of biology, basic aspects of tigers and their ecological role. Ranthambore is now flourishing with the population of tigers. They are migrating from Ranthambore to other areas. There are 3 corridors mainly: south, east, and north area. In south, there is a sanctuary called Ramgarh Bisdari Sanctuary in Bundi. There is one more tiger reserve recently developed by government, which is called Mukundra Hill Tiger Reserve in Kota. Then in north, there are few protected areas like Van Vihar in Dholpur. And then tigers going eastern side, crossing Chambal River. They are swimming in Chambal and then crossing to other state and then going to Kuno. So sometimes they are migrating 200 kilometer, 150 kilometer, and they are taking like 40 days, 50 days to reach such other areas. And tiger exploring new areas, but we don't have space for them. Unfortunately, like in the starting of 20th century, in this country, we were having around 40,000 tigers. There is a figure saying 1 lakh tigers, but 40,000 is the most appropriate figure. Now, right now, we have less than 3,000 tigers. And we cannot extend this population more than 4,000 tigers. Because we don't have space for them. This is the issue of carrying capacity. जैसे कि 1 लीटर की वाटर बोतल में 1 लीटर पानी आएगा, उसके बाहर सारा गिर जाएगा. Similarly, when tigers fulfill that particular habitat, they move from the area and then moving to other areas. So this is a very, very important aspect of the tiger reserve. Right now, what is happening in such areas?
The core is limited. The buffer, there is a farmland, there is a revenue land, then temples. Then, for example, in Ranthambore, this is the most secured habitat of tigers. But in the most crucial or critical tiger habitat, we have 400 plus temples, religious sites. I'm not against temples, but I'm against the biotic pressure, biotic disturbance because of them. Government trying to slowly moving them out, not the temples, but people. It's very difficult to touch any religious aspect in this country. Then mining, then railway lines, then highways. Recently, one highway passed through near Indragarh forest of Bundi, which is now government planning to convert into 6-lane highway. It's difficult to cross 6-lane highway by any animals. Is that when they expand the size of the highway, the vehicle speed is also increased. So tiger is one of the animal which is the iconic species of the country, but it is not the iconic species of this state. There are several other species we should give the same status like we are feeling. Whenever you go out of this country, people remember us for two things, for tigers and Taj Mahal. They say कि ये ताज के देश से आए हैं, they say कि ये टाइगर के देश से आए हैं. अब वो जमाना गया जब हमें सांप के नाम से जानते थे. परंतु still, when you come to Rajasthan, we should be remembered as a land of Godawan, Ghadial. Godawan is great Indian bustard, and Ghadial is Ghadial in English. Sometimes we use this word alligator. Alligator is different, totally different species. So in Rajasthan, we have 7 different species of cats. Tiger is one of the kind of cat. Then we have smallest cat in the world, which is called rusty spotted cat. Then jungle cat and leopard. Then we have very important species called Siagos. Siagos is a Persian word. You can see their black ears behind the ears. The color of the ears are black. Shia means Shahi. Shahi means ink. In Persian, this is a Persian word. So in Persian, this species is called Siagos. Gos means kaan. Khargos, khar matlab gadha, gos matlab kaan. So गधे जैसे कान वाला खरगोश, गधे जैसे एनिमल जिसके गधे जैसे कान हो वो एनिमल खरगोश हुआ. श्याह गोस जिसके काले कान है वो श्या गोस हुआ. So this is a very important species. Right now we have this species only in 2 or 3 states. मैंने एक 150 साल 200 साल पुराने लिटरेचर का सर्वे किया and the paper is going to publish very soon, and we concluded that this species was distributed at least in 14 states of the country. Now remain in only 3 states, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. And only Rajasthan is the most important area for this species. It is called caracal in English. In Marwadi, it is called Mormar Bagheri, and many other words, Mor Todni, Mormar Bagheri, many words we are using for this species. This state is also have a species called desert cat, which is also called wild Asiatic cat. Asiatic wildcat and then African wildcat and European wildcat all belongs to same kind of species, but there are various subspecies. So this species is very important. There is a trend in Rajasthan that we are not identifying our species for the research and other study. We are giving examples of wrong species. We are totally disconnected with our landscape. It is the situation of all over the country. Our students
know more about the rattlesnake than the king cobra or our species. So all the teachers and students should explore more about the local species so they can do more about such species. For example, we have 7 species of cats. Similarly, we have 5 species of dogs, 2 species of foxes, and then wolves, and then jackal. In the top left, you can see a fox which has white tail tip. It means it's a desert fox. Below this, you can see a fox with black tail tip. It is small Indian fox. In the right top, you can see a wolf, and almost similar looking jackal is called golden jackal. But it is very difficult for our teachers, even students, to identify and differentiate between these species. So our megaphonas need more attention, more research work, etc. So we can plan, we can give real solutions to forest department and authorities to save them. We have very good population of sloth bears in the state. At least 8 to 9 protected areas have sloth bears. Mount Abu has a very good population of sloth bears. Recently, by G.V. Reddy, Dr. G.V. Reddy conducted a research program there, and they, through DNA analysis, they estimated that around 100 plus sloth bears are there. So we should involve our students to do research on our local topics. This is very important. For example, chinkara. There are several subspecies of chinkaras in this country. One species is totally found in Deccan Peninsula of the country. Then one is found in Gujarat, Rajasthan. Chinkara is up to Balochistan, is totally different. And one species found in Punjab and Haryana part, which is totally different. So we should know, we should try to explore what is the kind of difference we have in the species. It is called Kenyan gazelle. Similarly, black buck. There are 2 subspecies of black bucks in the country. In Rajasthan, black buck, it is called Rajputana black buck, which is much more dark, much darker than the southern black buck. You can see the difference near the neck. Our black buck, which is just below this, the southern black buck, you can see the white part near the neck side or the chest part side. You can see much whiter than the southern black buck. So we have many specialties in this state, and we have to find out all these things, and we have to differentiate all these species. Similarly, long-eared hedgehog and pale hedgehog. There are saying that there is one more hedgehog in between these 2, but we have not much data about all these things. We have to start some kind of DNA sampling, all these things, and we have to use all the new type of technologies to identify species. Nowadays, we cannot rely only on the morphological characters of the species. We have to do all the DNA sampling and other things. Similarly, there is a very interesting rare species called honey badgers. We have not much idea about the kind of distribution. It is also found, sometime reported in Sikar, sometime reported in Nagur, sometime found in some unexpected area. This is a very, very elusive species, and camera trapping methods and all these methods can be helpful on such studies of such animals. Pangolin. I never thought that Rajasthan has a very good population of pangolin, but recently, because of some poaching gang caught by the Madhya Pradesh Forest Department, and they admitted that from Dholpur and Karoli, they are regularly killing these animals for their scales. This is a very, very
like a prize animal among the poachers. They are killing them for their scales. This is a very elusive animal. I have only seen twice in Savai Madhopur side, which is though both of them were rescued by Forest Department and then we release in the appropriate habitat. But it is very strange that poachers are silently killing our rare animals, and we have not much idea or not much study on such animals. For example, in desert, I was not aware about this rare look or elusive bird called Indian spotted creeper. ये खेजड़ी के पेड़ पे मिलती है. It looks like it's walking like a squirrel walking on the trunk of this खेजड़ी tree. Churu is the only place where people going and watching this. But I hope that someone will take this species to do more research, and it is found in most of the part of the state where a grove of khejdi, you'll easily found this species. But you need trained eyes, and you have to take help initially of the trained birder. But this is a very, very important species. But we are still doing research on the common species and very, very other species. Those are important for the state. We are not putting our attention. Similarly, like Lagar falcon is very important for Churu, Bikaner, Nagaur, and this belt, because the Lagar is a very common species in this area, and easily you can find in the all kind of gochar bhumi or your pasture land or grazing land, and they are spending most of the time in this part of the country, and you must do your MSc thesis, your PhD thesis on such subjects. Those are from this state. For example, there is an important role of vegetation in the conservation of species. You can do all these things, like in the picture number one GIB is dancing. This is their mating dance, or during the dance they comes in the open area. On the magra is a slightly higher ground, and they start dancing. But when they feel some threat, they start moving towards the bush. You can see near the picture number 2, when the light comes, they start early in the morning when the light is very low. In the picture number 3, you can see a raptor comes, and the GIB is showing threat posture, raise the tail and still dancing. But when in picture number 4, the animal, the raptor came, the eagle or baz came near the bird, it took shelter of the Caparis decidua jhadi. So this is very important, that how ecosystem is working. Ghadial is a very important. Still many people calling them alligator, which is technically totally wrong. Alligator found in America or China only, not in this country. And we are not using our words. This is a ghadial because they have a ghada or pitcher-like structure on their neck. These all are small babies or hatchlings of ghadial. Chambal has 88% population of this species. Earlier, it was considered as a Vahana of goddess Ganga. But now, not a single ghadial in Gangetic Ganga river, or possibly nothing in Yamuna river. But Chambal is a tributary of Ganga, or you can say Gangetic system. Ultimately, it goes and meet to Yamuna, then Yamuna meets to Ganga. But yes, Chambal is very important, and Rajasthan has this river. So we should start some kind of work on this species. So basically, I am trying to
putting your focus on our species. This is very important that in every animals like tigers, under the umbrella of tiger, there are several species like caracal and many sambar deers and then spotted deer and many other species are flourishing. Similarly, in the area of Godown bustard, there are many species like cream-colored courser or McQueen's bustard or desert lark or many interesting desert fauna are there. Similarly, in Chambal ecosystem, you can find many turtles. There are 10 to 11 species of tortoise and turtles in the area. Some of them are very rare. If you consider like top 10 rarest turtle of the world, from Chambal, you can find 3. Just like red crown roof turtle. This is the very rare and very beautiful turtle of Chambal. These species are facing threat of poaching also, because in the illegal market, poachers are silently collecting all the species. One of the very important species of the desert, this is called Sindh all-headed snake. I reported this genus in 2004 from Rajasthan, near Churu. There is a place called Gajsar. I reported this species from Gajsar. This is endemic to Thar, only found in Thar desert of Pakistan and India. Earlier, it was reported only from Pakistan part, but now, after my report, there are several reports came from Bikaner, Churu, Sikar, Nagaur, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur area also. So this is a very important species, mostly found in the loose sand. So they can easily hide themselves bury in the sand, and they only put their mouth out. And whenever some small lizards or small prey comes in the area, they easily catch them. Similarly, one of the very important species called red-spotted royal snake. These species need more attention, more papers, research, and all these things. So we can secure our landscape for them. We can protect our landscape with the help of these species. We can, like in Australia, one small lizard, because of the one small lizard, a mining lease was cancelled because that lizard was found only in particular area. So these snakes and creatures are important for the particular area, and you can start some kind of research. Recently, my organization started a kind of documentation portal, which is we call rajasthanbiodiversity.com. एंड ये स्टेट में ज्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स हिंदी में इसको पढ़ना आसान समझते हैं, तो हमने ज्यादातर आर्टिकल इसके हिंदी में रखे हैं, सो आसानी से लिखे जा सकते हैं। आप भी अपनी एरियाज का कोई स्पीसीज, पीपल इन कंजर्वेशन इश्यू, इसके ऊपर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें दीजिए। जैसे पिछले दिनों मैंने प्रताप जी से रिक्वेस्ट करी और मैंने राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिनका नाम है ईश्वर प्रकाश जी, उनके बारे में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल लिखा। ये आलेख वहां पढ़ा जा सकता है। तो हमें पता ही नहीं होता है कि किसने क्या काम किया है। तो ये कोशिश है हमारी कि हम राजस्थान बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करें, और ये एक ऐसा फोरम है जिसमें आप सब लोग भी भागीदार बन सकते हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं, और इसको हमारे साथ आप अपने भी आलेख को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मैंने आपका काफी समय लिया, मुझे आधे घंटे का समय दिया गया था, परंतु मुझे लगता है कि मैंने आपका ज्यादा समय लिया। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के कोई प्रश्न इस विषय पे हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खांडल। जानकारी दी है आपने टाइगर माइग्रेशन पे, गोडावन, घड़ियाल।
आपने बहुत अच्छा कहा कि यहाँ राजस्थान बेल्ट में अक्सर लोग एलिगेटर घड़ियाल को एक ही मानते हैं। आपने बहुत अच्छे जानकारी दी कि एलिगेटर इज डिफरेंट और घड़ियाल इज डिफरेंट। घड़ियाल एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मीनिंग आपने बताया। मैं हमारे विद्यार्थियों से उम्मीद करना चाहूंगा कि भविष्य में सर से आप और जानकारी लें, चिंकारा के बारे में, राजस्थानी ब्लैक बक के बारे में, हैजोक के बारे में। रियली सर, I hope that your talk will be benefited for all our students. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time. Once again, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Now, friends, we have, thank you, Dr. Dharmendra. Friends, we have with us our last speaker, Professor Vinita Shukla. She is well acquainted with Department of Zoology, Government Dungar College. She is well known to all of us. I would request Madam Leena Saran to introduce Dr. Vinita Shukla. Dr. Leena, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So kindly introduce Dr. Vinita Shukla. Okay. Am I audible? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Please carry on. Good afternoon, everybody. I take this privilege to introduce Professor Vinita Shukla from the Department of Zoology, MD University, Rohtak, Haryana. She is the Vice President of Local Chapter, Rohtak Society for Sustainable Agriculture and Resource Management, and the Chairperson of the House Allotment Committee, MD University, Rohtak. She is presently holding position as a member in many committees like the governing body, Baba Mastnath University, Asthari, the Grievances Redressal Committee for Non-Teaching Employees of MD University, Rohtak, the Central Purchase Committee, MD University, Rohtak, the Advisory Committee, Central Instrumentation Lab, MD University, Rohtak, the Advisory Committee, Alumni Department, MD University, Rohtak. She has many awards to her credit. Some of these are the Dr. MC Das Award 2020 JDSI, the Excellence Award 2019 ABRF Prayagraj, Dr. KV Shastri Award 2019 by AEB Lucknow, Fellowship Award 2019 by AEB Lucknow, Fellowship Award 2019 by GESA New Delhi, Dr. APJ Abdul Kalam Environmental Protection Award 2019, Blue Planet Society Allahabad, Best Scientist Award 2018 by Society of Life Sciences Satna, Honorary SLS Fellow Award 2018 by Society of Life Sciences Satna, Dr. Shashi Kala Balsare Gold Medal 2018 by IAES Haridwar, AEB Fellow Award 2015 by Academy of Environmental Biology, Lucknow, the Eco Reviver Award by IIEE New Delhi, the Young Scientist Medal by IAES Haridwar, and the Pragya Sahitya Samman 2015 by Pragya Sahityak Manch, Haryana. It's my pleasure to invite Dr. Vinita Shukla to give her speech and obliges. Thank you. Thank you, Dr. Leena. Now I welcome and invite Dr. Vinita Shukla to deliver her talk. Dr. Shukla, she would speak on research in toxicology, past and present scenario. Welcome, ma'am. Professor Vinita Shukla. Ma'am, kindly unmute yourself. Madam Shukla, can you hear me?
Namaskar. I'm audible, Dr. Sir? Yeah, madam. Thank you, Dr. Sir. Thank you. So thank you very much for such a nice introduction. और बहुत बहुत मेरा आभार है स्पेशली डॉक्टर पुरोहित को और सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबसे मैं इंटरेक्ट कर सकूं। इनॉग्रल से मैं जुड़ी हुई थी। इनॉग्रल प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम लोगों को जो सबको लोगों को जानने को भी मिला। मेरा टॉपिक जो है जो मैंने आप लोगों के लिए चुना है वो टॉक्सिकोलॉजी से है। तो अभी तक जो हमने सुना बायोडाइवर्सिटी था या राजस्थान के बारे में था, वो भी बायोडाइवर्सिटी था। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ थोड़ा सा टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, क्योंकि वो मेरा एक फील्ड रहा है रिसर्च का और बहुत सी यंग जनरेशन या यंग टीचर्स वो ये चाहते होंगे कि वो टॉक्सिकोलॉजी में काम करें। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि टॉक्सिकोलॉजी में एग्जैक्टली क्या चाहिए, टॉक्सिकोलॉजी क्या है या उसका सेंस क्या है, या हम कैसे उसको फर्दर अपनी रिसर्च में या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट टॉक्सिकोलॉजी। So I'm sharing my slides. I hope they are visible. My slides are visible, Doctor? Now this is my university, Maharishi Dayanand University, Rohtak. It is a state university which has been A+ grade university. Ma'am, please, sorry to interrupt you. Your slides are not shared with us. Okay, let me check. Beta share करना। बहुत बढ़िया। ये कहेंगे मैं सुबह कल करना चाह रहा हूँ। Yes, your screen is there. Now please open the PPT. Okay. Make it full screen, ma'am. Full screen. जी, full screen. क्यों? Actually, I'm using tab. This tab. No problem. You can continue. They are visible now. Yes, sufficiently visible. So this is my university, Maharishi Dayanand University, and this is my department of Zoology, which has been incepted in 2009. And it is DSTP's department. From BT and DST, we got the funds. It's myself, and topic is researching logic, past and present scenario. So it is important to note that how the toxicology, it came into the research field and how we are dealing with. So all description, whenever you want to submit any type of project, whenever you want to go for any type of research, you should know, you should learn what is toxicology is, what is going on, what was going on earlier and now in future. Now, toxicology, it is the study of adverse effects of chemical substance on living organisms and the practice of diagnosing, treating exposures to toxins and toxicants. So we know that whenever we select any type of organism for our study, ultimately we have to check that whether it is having some impact, some toxin is there, whether it is man-made, whether it is natural, then ultimately what is the impact on it. Now, whenever such exposures are there, there must be some relationship between dose and its effects on the exposed organism. Now, whenever we say dose, it can be exposure acute or the chronic one.
whenever it is acute means it is short duration. Mostly we take 96 hours, even for 24 hours. And if it is a chronic, it can be for days, for months, or even years. Now, next comes the route of exposure, that how you will expose the animal to the toxicant. You want to study the impact of that particular toxic substance. So route of exposure, it can be either through oral, through injections, or through by keeping in the ambient medium. Now, species, whatever you are using, age of the particular animal, sex of the animal, and the environment. Means the static conditions, they should be the same while we are doing any type of research. Now, toxicologists or the experts, they also work on poisons and what is the cause of poisoning. So even poison, it also comes under the toxic substance. The goal of toxicity assessment to identify what the adverse effects of a substance. Like whenever we say that this particular thing, it is causing pollution or it is causing bad effect on human beings or the living beings or even to the plants or to the total environment. So how we can say that this is a polluting substance or this is a toxic substance? So ultimately we have to check the route of exposure, while either it is oral or inhalation, means through the respiration, or if it is dermal or through the skin. And then as I discussed earlier, that what is the dose, how much duration it has to be exposed, and what is the concentration of the exposure. Now, whenever we say dose, then substances, they are to be tested. They are out of the two ways. Meaning is कि either you go through the literature में जितने भी पेपर्स अवेलेबल हैं उस कंसर्न सब्सटेंस से लेकर या आपने जो चुना है ऑर्गेनिज्म या कह लीजिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में जो अब तक पेपर छप चुके हैं, यू हैव टू चेक थ्रू द लिटरेचर कि उसके लिए वो सब्सटेंस कितना टॉक्सिक है, उसके लिए कितनी डोज दी जानी चाहिए इफ इट इज अवेलेबल इन द लिटरेचर. अगर ऐसा ना हो, then we have to expose the particular animal with the help of the toxicant जो आप पढ़ना चाहते हैं. For example, अगर आपके एरिया में जैसे in Haryana we are using pesticides, so lot of work it is going on pesticides. तो if you want to study a particular pesticide कि इसका क्या effect होगा on farmers, human beings, or you are selecting any model like rat or mice, then ultimately you have to expose that particular pesticide in the respective dose. आप उसको 24 घंटे एक्यूट के लिए या क्रोनिक में कुछ महीने या डेज के लिए आप उसको एक्सपोज करेंगे, then you will require a dose कि कितनी डोज से उसको एक्सपोज करें. So that dose it has to be examined through two methods. Either आप उसको लिटरेचर से देख लें या फिर आप उसको 4 दिन के लिए मान लीजिए 10 एनिमल लिए, आप उसको एक किसी भी निश्चित डोज के साथ आप एक्सपोज करिए और जहां उसमें आधे ऑर्गेनिज्म जिंदा बचे आधे मर जाएं, we say that is the half lethal concentration, और हम फिर उसको लेके चलते हैं एक्यूट एक्सपोजर के लिए. तो इस तरह से टॉक्सिकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट सेट होते हैं. नाउ फैक्टर्स that can affect the chemical toxicity. पहली चीज the doses. तो लार्जर सिंगल एक्सपोजर हो या स्मॉल एक्सपोजर्स हो, जो छोटे टाइम की स्टडी होती है उसमें हम एक्सपोजर कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं. फॉर क्रोनिक वी हैव टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन. किस तरह से हम उसको दे रहे हैं और स्पीसीज है, एज है, हेल्थ उसकी कैसी है, इंडिविजुअल उसके फीचर्स कैसे हैं, all that they influence the chemical toxicity. Meaning is कि whenever environmental pollution is there, कुछ लोगों को अगर environment में if the air it is not good, somebody it cough, means कुछ को तो inhalation में problem होती है, coughing होती है और कुछ को नहीं होती. Means it depends to individual. तो same results कभी नहीं आते. कई बार we discuss that on the same lines many workers they are doing the work. Reason being because हर एक इंडिविजुअल का, हर एक कंडीशंस का, हर एनवायरमेंटल लैब का डिफरेंस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिजल्ट्स वो भी डिफरेंट आते हैं. दैट्स व्हाई ऑन द सेम लाइंस मेनी पीपल दे वर्क समटाइम्स. टेस्टिंग मेथड्स,
Testing methods you must have read or must have studied. You must be knowing that these are three types. We say in vivo studies, in vitro, or in silico. In vivo, we are using the whole animal and doing the experiments in the live condition. In vitro, when we are testing on the isolated cells or the tissues, हम टिश्यू या सेल्स को बाहर निकालते हैं और उन पर काम करते हैं. We no need to inject any toxicant inside the body of the animal. And third, it is in silico. Silico, it is the new term. Whenever we go for the computer simulation, जैसे biostats या bioinformatics के help से we go for the studies. So these are three testing methods in toxicology. Now humans, we never, sometimes every time we cannot expose the human beings to any type of toxicant because it can be poisonous. So we have to select non-human elements. Then whenever we select them, mostly initially it was Galleria, जो mammals की जगह use किया जाता था, or otherwise we are using rat or mice. For few other species we can go for Drosophila है. Any species you can select for which is non-human, and ultimately we have to go for the ethical issues now. We have to take the permission from the ethical committee, and then you can use the coordinate for further studies. Even for few invertebrates, the ethical permission it is required जो कि endangered animals है. तो आप select कर सकते हैं any model. Now, those response complexities, few terms are there in toxicology. Environmental pollution जो पढ़ा रहे होंगे या environmental biology इस subject से जो deal कर रहे होंगे teachers, as in theory में, experiments में, research में, they must come across in these terms. LD50, it is called median lethal dose, which kills 50% of the population. NOEL, no observed effect level. Highest dose, even that does not show any effect. NOEL, again, no observed adverse effect level at any dose. PEL, it is called permissible exposure limit. So that is the higher concentration through which we are permitted to expose the animal. Then STEL, short-term exposure limit. In general, if you expose for 15 to 30 minutes, then we have to give the highest concentration. TWA, time weighted average, and TTC, threshold of toxicological concern. So this is for the tobacco, because when the tobacco it was considered as a pollutant, then this TTC it came into the existence. So these are different doses which are there in studies. Now in toxicology, you think that only one exposure of any type of substance, which is we say it is toxic or pollutant, just to expose that, and then we have to go for different type of symptoms, different types of tests, and different types of observations. Accordingly, toxicology, it has been defined in various, you can say, branches. First, it is called medical toxicology. Here, what the doctors or the physicians, they do. For example, nowadays, COVID virus, it is there. Now, this coronavirus, if you are going to study it, you are going to make a vaccine for it. So that thing, it is called medical toxicology, because toxic impact of that virus, it has to be eliminated. So this clinical toxicology is the discipline which can be practiced by physician, means which are degree holder of doctors, and others like physician assistant, nurses, pharmacists, and allied health professionals. So whenever they work, we say it is medical toxicology. Then computational toxicology, in which mathematical and computer-based models are there. So new branches, bioinformatics, biostats, they are there, which includes this toxicology, which form a particular model. And ultimately, through which we can understand and predict that what the chemical can cause on the health. So environmental pollutants and pharmaceuticals, they are using whenever we go for any drug effect. If newly formed drug it is there, we have to go for this computational toxicology. Then aquatic toxicology. This is very popular. Whichever person who is working with aquatic organisms, which are selecting aquatic animals as their model for work,
ultimately it is the aquatic toxicology, in which we have to use everything concerned with anthropogenic effect. If we are dropping like plastic bags, we are dropping in the water reservoirs. Chemicals, they are there. Runoff, it is there. Agricultural, you can say runoff, they are also there. From the factories, they are there. So ultimately, from subcellular to individual organisms, whenever we study or everything about the aquatic animals, we say it is aquatic toxicology. Now, these tests are there. Either we have to go to the fields. So you must have come across while doing any type of science experiments that if you are working on multiple species, not a single one, then you have to move to the field along with your experimental kit. काफी किट्स अवेलेबल हैं थ्रू वेरियस थिंग्स दैट यू कैन एट द स्पॉट आप जाके वहां पे आप जैसे सॉइल और वाटर का फीचर्स देख सकते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इफ एनी पॉल्यूशन इट इज देयर और नॉट. अदर वन इट इज द नॉर्मल वन दैट इज लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, जब आप इस सिंगल स्पीसीज को लैब में लाके और उस पर काम करते हैं. एंड व्हेनेवर वी स्टडी कोई भी एनिमल, व्हेनेवर यू स्टार्ट द टॉक्सिकोलॉजिकल वर्क, अल्टीमेटली यू हैव टू टू थिंग्स. एक आपके पास एनिमल होगा और एक टॉक्सिकेंट होगा, जिसे आप पॉल्यूटेंट या टॉक्सिन्स कहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इट विल बैडली इफेक्ट द एनिमल. तो एक आप उसको बनाना पड़ता है. देयर मस्ट बी सम डोज व्हिच हैज टू बी गिवन एंड अल्टीमेटली उस डोज के रिस्पॉन्स में क्या रिजल्ट आता है ये आप एक डायरी या रजिस्टर में नोट करेंगे. एंड यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ कि आपने मान लीजिए 5 ग्राम का एक्सपोजर दिया या 5 मिलीग्राम या माइक्रोग्राम, तो 5 का एक्सपोजर दिया तो ऑन एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे और वाई एक्सिस पे आप रखेंगे व्हाट इज द मोर्टेलिटी और व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ पर्टिकुलर पैरामीटर जो आपने सेलेक्ट किया. तो मान लीजिए आप देख रहे हैं कि किसी टॉक्सिकेंट का इफेक्ट ग्रोथ पर क्या है, तो वाई एक्सिस पर आप ग्राम्स में वेट रखेंगे उसका कि घट रहा है या बढ़ रहा है. तो एक जस्ट जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाएगी. नाउ एक्सपोजर सिस्टम या तो स्टैटिक हो सकता है, जब आप एक चीज को लाके लैबोरेटरी कंडीशंस में डेफिनेट आप अमाउंट देते हैं. रिसर्कुलेशन, जब आप उसमें पंपिंग के थ्रू एक्सपोजर डालते हैं. रिन्यूअल, उसमें क्या आप रिन्यू कर रहे हैं, आपने पूरा पानी निकाल दिया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें था और नया पानी डाल के दोबारा से डोज डाल दी. एंड फ्लो थ्रू में कंटिन्यूअस आप रिन्यूअल करते हैं वाटर का सर्कुलेशन में, ताकि आप टॉक्सिकेंट को डालें और बार बार उसको फ्लो थ्रू करते रहें. नाउ टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स दे कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब आपने एक्सपोजर कर दिया टॉक्सिकेंट से, उसको एक्सपोज कर दिया एनिमल को, उसके बाद आप 2 चीज देख सकते हैं, आइदर देयर इज एनी डायरेक्ट टॉक्सिसिटी और इनडायरेक्ट. मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा या इनडायरेक्टली अलोंग विद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल और केमिकल, किसी तरह मींस बायो प्रोडक्ट्स के द्वारा वो इफेक्ट करेगा. मीनिंग इज कि अगर आपने कोई केमिकल, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड है विच इज केमिकल, तो हो सकता है अपनी बाय प्रोडक्ट के कारण ज्यादा इफेक्ट करे, डायरेक्ट इफेक्ट ना कर पाए. और अगर आपने कोई अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोजर दिया है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा किसी रेडिएशन का. दैट इज द सेंस. तो हम नोट करते हैं कि क्या लीथैलिटी है, मर गया है. अगर एनिमल नहीं मरता तो कोई सबलीथल इफेक्ट डालेगा, जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं बिहेवियर कैसा बदला, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आए, बायोकेमिकल चेंजेस क्या आए और हिस्टोलॉजिकल चेंजेस क्या आए. हिस्टोलॉजिकल मतलब टिश्यूज. सो वी कैन टेक द टिश्यू एंड अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर द माइक्रोटोम. स्लाइड्स बनाएंगे आप, उनके सेक्शन कटिंग करेंगे एंड यू हैव टू गो फॉर द स्टेनिंग. So these are the different effects. In toxicology, again, there are 3 R's: replacement, reduction, and refinement. Replacement means हम आजकल करते हैं कि एनिमल को ना मारा जाए एथिकली. सो अल्टीमेटली वी हैव टू यूज नॉन एनिमल मेथड्स, जो कि हो सकते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग. रिडक्शन, अगेन वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल्स. वो हम ज्यादा ना मारे. एथिकल कमिटीज दे वोंट अलाउ लार्ज साइज ऑफ animal, large number of animals. And refinement in which we have to check that it should not be painful, it should not cause any type of disease, so that animals, they should not be affected much. Now whenever toxicological studies are there, they undergo synergistic effect,
potentiation and the antagonistic effect. So once meaning is sometimes two pollutants at the same moment they are acting. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्दियों में कोई या गर्मियों में कोई काम कर रहे हैं तो गर्मी का भी एक अपना इफेक्ट रहेगा, एंड एट द सेम मोमेंट जो आप एक्सपोजर कर रहे हैं जिस मेटल से या जिस भी पेस्टिसाइड से, कोई भी टॉक्सिक से, उसका भी रहेगा. सो एज नेम इंडिकेट synergistic, when combination of effects it is there and it is more than single effect. Potentiation, it is the effect which is added to the toxicant, जिसके जुड़ने से इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है. पोटेंशिएट मतलब इंक्रीज करना. जैसे मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन कम हो रही है और टेम्परेचर हाई हो गया पानी का तो अल्टीमेटली वो और कम कर देगा. दैट इज द पोटेंशिएट. एंड एंटागोनिस्टिक मतलब विपरीत. इफ आपने दो एक्सपोजर, दो साथ साथ टॉक्सिकेंट्स हैं, वो आपस में अपोज भी कर सकते हैं, उस इफेक्ट को खत्म करेगा, कंट्रैक्ट करेगा. तो इस तरह से स्टडी किया जाता है. अब तो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, एक होता है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और एक होती है इको टॉक्सिकोलॉजी. तो जो लोग टॉक्सिकोलॉजी पे काम नहीं करते उनको लगता है दे आर नॉट मोर देन डिफरेंट टर्म्स, जबकि ये डिफरेंट टर्म्स है. When it is ecotoxicology, you should understand that it is concerned with population and ecosystem level. It is at the vast level. And when it is environmental toxicology, it focus upon effects at the level of the individual. तो अगर आपने ह्यूमन बीइंग पे और फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का, किसी पॉइजन का आप असर देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग पे या रैट पर, दैट विल बी एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी. अगर आप ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन हुई, ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है, ग्लोबल हीट बढ़ रही है, सो ग्लोबल वार्मिंग, तो उसमें पूरा एनवायरमेंट एंड द होल कम्युनिटीज आ जाएंगी. सो दैट विल बी द इकोटॉक्सिकोलॉजी. तो जो बहुत बड़े स्तर पर है दैट इज इकोटॉक्सिकोलॉजी उसे कहते हैं. एंड व्हेन इट इज फॉर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, दैट इज एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी. Now animal rights. So animal rights, it is considered whenever we go for ethical thing. So ultimately we have to see that in vivo testing जब भी हम करें, those have to be controlled, the variables that affect the behavior of the biological system. तो ethically अगर आप देखें कि वो aggressive हो रहा है animal, at the same moment we have to stop the working. So these are called animal concerns. So एक एथिकलिटी से आप परमिशन ले रहे हैं वो एक डिफरेंट बात है, बट एनिमल राइट्स को भी आपको देखना पड़ता है. अगर वो ज्यादा एग्रेसिव होगा इट कैन कॉज हार्म टू द एक्सपेरिमेंटल पर्सन और जो साथ में लोग हैं उन्हें. नाउ व्हाट शुड बी द सोर्सेज ऑफ लैबोरेटरी एनिमल्स. सो यू मस्ट बी नोइंग दैट डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पर काम करना चाह रहे हैं, आइदर आप उस एनिमल को ब्रीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन हरियाणा इन MDU एनिमल हाउस इज देयर, and if breeding it is there, like in Hisar it is also going on, so we can take the animal from there itself. So breeding आप या तो कराइए उस एनिमल की. अब फिश अगर आपको चाहिए, आप चाहे तो फिश अपने यहाँ रखिए, लेकिन आप उसका अगर ब्रीडिंग नहीं करा रहे हैं तो यू कैन गो फॉर द वाटर. रिवर में चाहिए हो फिश को ले आइए. सो अल्टीमेटली जहां से आपको लाना है उस तरह से आप ब्रीडिंग करिए, या फिर आप किसी तरह का भी कॉस्मेटिक स्टडीज जैसे करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. कोई नया कॉस्मेटिक लिपस्टिक बनी है फॉर एग्जांपल, और फार्मेसी वालों को टेस्ट करना हो तो दे सेलेक्ट द माइस, एंड मोस्टली दे सेलेक्ट द फीमेल माइस. सो अकॉर्डिंगली वी कैन सेलेक्ट द एनिमल, जिस तरह का नीड होता है उस तरह. सो फ्रूट फ्लाइज, दे आर द इन्वर्टिब्रेट्स जो ज्यादातर एनिमल टेस्टिंग में टॉक्सिकोलॉजी में यूज होता है. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है वो यूज होता है, या फिर एक नीमाटोड है सी एलिगेंस. तो ये स्पीसीज है विच आर मोस्टली वी आर यूजिंग फॉर द टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज. ड्रग्स फूडस्टफ्स के लिए वी हैव टू टेक 1 to 3 months. Then if we are taking again more than 3 months we say chronic. And अगर हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी देख रहे हैं तो हम ऑर्गन्स को डैमेज करके लॉन्ग ड्यूरेशन तक तब देखते हैं. So whether it is a drug, it has to be tested. जैसे वैक्सीन बनाई जा रही है कोरोना की, तो उसमें भी हम वो कहीं इरिटेट तो नहीं करती, कोई म्यूटेजन तो नहीं है, कोई कार्सिनोजेनिक या कैंसर कॉजिंग तो नहीं है.
या रिप्रोडक्टिव कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहेगा। इस टाइप से जब भी किसी ड्रग का स्टडी की जाती है, दैट शुड बी द either acute as well as to the chronic one. Next, it comes forensic toxicology. So it is very important whenever you have to stick through the police or through forensic science, forensic biology is also there. Different fields are there. Then ultimately we have to go for analytical chemistry, pharmacology and clinical chemistry. तो आप देख सकते हैं कि what is the legal aspect of it. अगर कहीं कोई डेथ हुई है तो ultimately we have to check that आसपास का माइक्रोबियल या माइक्रोबायोडेटा क्या है, and ultimately we have to check that कि उन पर क्या इफेक्ट हुआ है, and we can understand what can be the impact on the human beings. So such type of forensic toxicology, it is a new term which has come. So they have to check any type of physical symptoms mostly, because they have to collect at the crime scene many things, pill bottles, powders, trace residues and available chemicals. So you must have watching, अगर आपने देखा हो कोई भी CID इस टाइप के जो प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि फॉरेंसिक लैब या IFL, ये फॉरेंसिक लैब वाले ये लोग वहां आके कलेक्ट करते हैं कुछ सैंपल्स. सो दैट इज कॉल्ड फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी. स्पेशली इन ड्रग्स के केस में, हेरोइन जो है या कोई भी मॉर्फिन है, उसके केस में मोस्टली द फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इट हैज टू बी यूज्ड. इन विट्रो, व्हेनेवर सम टाइप ऑफ ड्रग्स का यूज देखना हो, व्हेनेवर अब जैसे वैक्सीन बन रही है, हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. सो व्हेनेवर मैमल सेल्स या कोई भी कल्चर करके या डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स पे, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टेस्ट समथिंग, it is called therapeutic drug, agricultural chemicals and food additives. इनका इफेक्ट हमें डायरेक्टली देखना पड़ता है ऑन द लाइव फीचर्स. जैसे कहीं भी कोई मिलावट हो रही है या किसी चीज में मिलावट है, जो कहते हैं कि भाई दूध में भी पेस्टिसाइड है, हाउ डज इट इज अफेक्टिंग, सो दैट इज कॉल्ड द लाइव टेस्टिंग. इन तो once it is having, हमें लगता है कि ये कुछ इफेक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू टेक द सेल्स फ्रॉम दैट लाइव एनिमल जिसको हमें लगता है उसमें एक्सपोजर हुआ है, और फिर उसको इन विट्रो हम टेस्ट करके देखते हैं कि whether it is having some impact on the cells or not. Xenobiotic toxicity, जो हम मटेरियल बनाते हैं उनका क्या इफेक्ट है. जैसे पेस्टिसाइड्स भी हमने बनाए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी फैक्ट्रीज बनाती हैं, ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट हैं, हैवी मेटल्स का रिलीज होता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में. तो जो ह्यूमन मेड हैं उनको जब टॉक्सिसिटी उनकी पढ़ी जाती है, इट इज कॉल्ड xenobiotic toxicity. Whenever we go for such studies, there must be some type of risk assessment. तो जो environmental biology या ये पढ़ाते हैं, they must be knowing that such applications they are linked with what is the risk assessment. We say that इससे ये impact होगा. Now animal testing ये rat या mice पे हम ज्यादातर करते हैं. तो आइदर हम वाईवी सेक्शन काटते हैं जिसमें कटिंग अप होती है लिविंग एनिमल की, जिसे डायसेक्शन भी कहा जाता है, और उसके बाद हम डायसेक्ट करके पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन या सिस्टम, वी हैव टू चेक द टॉक्सिसिटी. ऑक्यूपेशनल, दिस इज अगेन व्हाटएवर द वर्कर्स दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड इन माइंस, इन फैक्ट्रीज, उन पर जब हम इफेक्ट पढ़ते हैं कि क्या टॉक्सिक इफेक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल टाइप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. It is being used for the measurement of a chemical's metabolite or biochemical effect on the specimen for the purpose of assessing exposures. तो ये जब हम कहते हैं कि माइंस में जाएंगे या अंडरग्राउंड वर्क करेंगे या किसी गटर में कोई काम कर रहा है, तो किस तरह के वहाँ केमिकल हो सकते हैं, किस तरह के इंडस्ट्रीज में एफ्लुएंट्स हो सकते हैं. तो ऑल दीज स्टडीज दे आर हेल्पफुल कि उसको हम कम कर सकें. तो जब भी कोई गैस लीकेज कांड होता है या एनीथिंग रिलेटेड टू कुछ लीक हो गया, तो such type of thing which is comes under occupational toxicity. Then toxicogenomics, as name indicate, when genomics it get related at the genetic level, we are studying, we are interpreting that genes and proteins how they are interacted. Another term, new term it has come, it is called toxinology. It is the scientific discipline which is dealing with microbial, plant, animal venoms, poisons and toxins. Like if we are using snake venom, or we are using any type of, you can say, spider venom or scorpion venom, then we call it toxinology. So whatever the animal, it is releasing that, what
how this venom, it will affect toxin, it will affect the body. So toxic, it is other thing, and toxin, it is other thing. So toxin means whenever some poison is there on the body. Then clinical toxinology. So whenever some type of poison it is there, जैसे ये पेस्टिसाइड्स की गोलियां होती है, वो कोई खा ले, या आपका ये मॉस्किटो रिपेलेंट है, ये पी ले, डेटका पी ले, कोई भी ऐसी टाइप की लिक्विड जिसको हम, जिसमें थोड़ा बहुत एसिड है, वो पी ले. वंस दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, या कोई स्पाइडर या कोई स्नेक कुछ भी काट ले, such type of poisons, whenever toxicological studies is going on that, we say it is the clinical one. So in surgery or radiology mein we have to use it. So in the last, let me tell that animal research statistics kya hai, ki whenever testing it is there, most of the time in 2003, after that no such type of study is there, but even then it is practically now also 61% of animals, they are used without, which suffer no pain. 31% have pain relieved by anesthesia, and 8% experience pain, and alleviation would compromise the validity of data. Meaning is that whenever we are using animal, some statistics, it is found that we try, we are working on toxicology field, so ultimately we think that animal should not suffer, it should not get any type of pain. So anesthesia can be given, and we try to less effect to the animal. So we have to investigate mostly for the diseases, for the drugs, and for the surgery. And for cosmetic research also, we are using these mice or the rats mostly. So whenever we are going for that, we have to take care. We have to notice, as per ethical issues, we have to notice the effect of any type of drug continuously. And if the animal, usko agar koi bhi kisi bhi type ki problem hai, we have to check that they should not suffer. हमें उसी टाइम वो एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए. So the purpose of this figure, it is कि हम उसको नोट कर रहे हैं at every moment कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसकी डेथ तो नहीं हो रही, वो बीमार तो नहीं हो गया, और कोई एलर्जी तो नहीं है. So this is the percentage that we are using in different countries. So either it is cold-blooded animals or it is other mammals. We are using very much number of this, high number of these animals for our studies, for toxicology studies. You can see rabbits, rodents, guinea pigs, rats, mice, other mammals other than these which has been disturbed, and carnivorous animals, monkeys, Perindactyla, everything it is being used. So many animals we are using, then we have to take care of those animals also. So my last message it is that we have to take care of animals in and for science. So in means whenever we are doing research, and for science means if you are working and you have to work in future also, we have to take care of animals. They should not be suffered much more. हमारे लिए उनको एक्सपेरिमेंट के मॉडल की तरह लेना जरूरी है, पर उनके लिए हमें यू कैन से सहानुभूति रखना या कंसिडरेट होना भी बहुत जरूरी है. So here I end up my lecture or my, you can say, interaction with you. Thank you very much. Thank you very much, Madam Shukla. I heard your lecture very carefully, and I am very happy you could explain properly about the various aspects of toxicity, routes of exposure, oral inhalation, what are the dose effect, dose factors, and the how does the dose effects, it depends on the species, age. You discussed about the annual ethics committee. Ma'am, I would like to mention here, as you know, here in the Department of Zoology, we are also working on the toxic effects of cadmium, lead, mercury, individually or simultaneously along with the radiation. And we are using certain herbal drugs also, like aloe vera, amblyca, like the moringa. So many drugs we are working as radioprotective. Thank you very much, ma'am. I hope in the future also, as and when we need your help, you will be available for all of us. Once again, thank you very much. Keep smiling always, ma'am. हमारे बीच अब उपस्थित हैं मैडम शालिनी मूलचंदानी, हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं.
किसी कारणवश उद्घाटन सत्र में कोई तकनीकी समस्या के कारण से आप ज्वाइन नहीं हो पाई थी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शालिनी मैडम से, आप यहाँ मंच पर पधारें और हम सबको अपने वचन से लाभान्वित करेंगी। डॉक्टर शालिनी मैडम। धन्यवाद पुरोहित जी। वेबिनार में मौजूद सभी सहभागियों को मेरा प्रणाम। प्राणी शास्त्र विभाग राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर द्वारा आज दिनांक 4/11/2020 की एक दिवसीय जीवन विज्ञान लाइफ साइंसेज पर आधारित राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज कोरोना के इस भयावह संकट के दौर में यह वेबिनार निश्चय ही बहुत उपयोगी है। मैं राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर वीके सिंह जी, माननीय कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, आज की वेबिनार के गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय प्रोफेसर MM सक्सेना जी, कुलपति टाटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर, सम्माननीय डॉक्टर शिशिर शर्मा, प्राचार्य राजकीय महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय बीकानेर, आदरणीय डॉक्टर रविंद्र मंगल सर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर राकेश हर्ष, सहायक निदेशक, आप सभी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय प्रदान कर हमें लाभान्वित किया। हम वेबिनार के संरक्षक हमारे माननीय प्राचार्य डॉक्टर JP सिंह साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में महाविद्यालय निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। हमारे प्रख्यात विदुषी वक्ता प्रोफेसर विनीता शुक्ला मैम, प्रोफेसर प्राणीशास्त्र विभाग MD विश्वविद्यालय रोहतक, डॉक्टर धर्मेंद्र खंडाल जी, कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, संरक्षण जीव विज्ञानी, टाइगर वॉच रणथंबोर सवाई माधोपुर, एवं प्रोफेसर BN पांडे साहब, अध्यक्ष जियोलॉजिकल सोसाइटी इन इंडिया, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोध गया के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। वेबिनार की चेयरपर्सन डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव मैम, मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे साथ महाविद्यालय में पधारने की मंगल कामना करती हूँ। मैं कार्यक्रम के संयोजक सदैव सक्रिय, कर्मठ एवं ऊर्जावान डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित जी, समन्वयक डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव जी, आयोजन सचिव डॉक्टर अरुणा चक्रवर्ती जी, वेबिनार के सह संरक्षक, सह समन्वयक, सह अध्यक्ष, सह आयोजन सचिव, कोर कमेटी डॉक्टर नरेंद्र भुजक साहब, डॉक्टर SK वर्मा जी, डॉक्टर हेमेंद्र भंडारी जी, जिन्होंने वेबिनार के तकनीकी पक्ष को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा। वेबिनार की सलाहकार समिति के सभी सदस्यगण, वेबिनार में सहभागिता कर रहे सभी सहभागी, इन सब के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हम सोशल मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम स्टेपल डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चय ही जीवन विज्ञान पर आधारित ये वेबिनार सफलता के चरम सोपान को प्राप्त कर चुकी है एवं इससे अनेक नए आयाम भी दृष्टिगत हुए हैं, जो देश और समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। सभी वक्ताओं को सुनना निश्चय ही बहुत सुखद और ज्ञानवर्धक रहा। मैं पुनश्च वेबिनार के आयोजकों को और उन सभी सहभागियों के प्रति अपना आभार इन शब्दों में व्यक्त करती हूँ। निशब्द हैं हम, क्या कहें। आप सभी का हृदय से आभार है। आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान हमारी प्रेरणा का आधार है। आप सभी का पुनश्च आभार, धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत आभार डॉक्टर शालिनी मैडम, जिस मधुर वाणी में आपने आभार व्यक्त किया, हम सभी एक बार दोबारा फ्रेश हो चुके हैं मैडम। बहुत शानदार वाणी आपकी, बहुत बहुत आभार आपका। Now we have with us the organizing secretary of this national webinar, Dr. Aruna Chakravarti ma'am. I would like to give a brief introduction of Dr. Aruna. Dr. Aruna, she is an expert in the field of radiation biology. She has produced 6 PhD and dozen of MPhil under her supervision. She has published more than 4 dozen research papers in the national and international journals. She is the member of National Executive of Indian Society for Radiation Biology. She is a life member of Indian Science Congress Association and many other academic activities. I would request Dr. Aruna to express vote of thanks to all of us. Welcome, Dr. Aruna Chakravarti, Organizing Secretary of the National Webinar. Thank you, Dr. Purohit. Good afternoon, ladies and gentlemen, the galaxy of intellectual, invited guests, teachers, and dear friends. I, on behalf of the Department of Zoology, Government Dungar College, Bikaner, Rajasthan, and on my personal behalf, extend a very hearty vote of thanks to all speakers for gracing your presence and sharing with us your finding and opinion today. First of all, let me start by giving glory of the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Professor V.K. Singh sir, Vice Chancellor Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion and very inspiring inaugural address. And I also express my heartfelt thanks to guest of honor, Professor M.M. Saxena, Vice Chancellor, Tatia University, Sri Ganganagar. Sir, your presence today is great source of motivation to all of us. Thank you very much, sir. Dr. Shishi Sharma, Principal Government MS College, Bikaner, for encouraging us with his humble presence and best wishes. We extend our hearty gratitude to Dr. Ravin Mangal, Principal Government College, Nokha, and Dr. Shalini Mulchandani, Head of Hindi Department, Government Dungar College, Bikaner. We are grateful to Dr. G.P. Singh, Principal, Government Dungar College, Bikaner, for providing opportunity to organize this webinar on recent advances in life sciences. You have been a constant support and given us a lot of encouragement. Thank you, sir. I would like to thank our distinguished speakers, Professor Vinita Shukla, Department of Zoology, MD University, Rohtak, for her efforts towards research in toxicology, past and present scenario. I may like to express our sincere thanks to Dr. Dharmendra Khandal, conservation biologist, Tiger Watch, Ranthambore, Savai Madhopur, for his explanation of Rajasthan biodiversity and its conservation. I must mention our deep sense of appreciation for Professor B.N. Pandey, President Zoological Survey of India, Magad University, Bodh Gaya, for making excellent presentation, Biodiversity for Human Welfare. I would like to thank our chairperson, Dr. Meera Srivastav, Head Department of Zoology, Government Dungar College, Bikaner, for her contribution and guidance. Ma'am, take care and get well soon. I would like to acknowledge our gratitude to Dr. R.K. Purohit, convener of webinar, for providing encouragement, the perfect logistic support and guidance. We are grateful to Dr. A.K. Yadav sir, Dr. Deepti Srivastav ma'am, Dr. Pratap, Dr. Leena, Dr. Kailaswamy, Dr. Yogendra sir, Dr. Manisha, and all the members of organizing committee for knowledge build scientific lecture.
I deem it great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. We are grateful to our co-chairperson, Dr. V.K. Airy, Associate Professor of Economics, Government Dungar College, Bikaner, for his continued support. We extend our hearty gratitude to Dr. Narendra Bhujak, co-convener, for their enormous cooperation in organizing this magnificent event. Thank you very much, all the distinguished invitee, webinar cell, registration desk, technical team, especially Dr. Sonu Shiva, Dr. S.K. Verma, and Dr. H.S. Bhandari. I thank the members of media for inviting interest in the event and my digital partner, Staple, for financial and technical support to organize this webinar. Staple has connected we all. Thank you once again, Staple, and all good hearts for who work behind the screen. No event can take shape without the hard-working leaders. It was the dedication and enthusiasm of our leaders. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress, and working together is a success. Have a wonderful day. Thank you. Thank you, Dr. Aruna Chakrathi. Thank you all. I request Dr. Surya Sharma, if you want to make an announcement, Dr. Verma. Sure, the link of feedback has been provided in both the WhatsApp groups of this webinar. Also has been posted in the chat box of this webinar. And especially I would like to give thanks to all the participants that I was communicating on the behalf of convener from last 5 days with you. And hopefully I have served better to you. And thank you very much to all the participants, to all the dignitaries, especially to the participants. Their active participation has made this event wonderful. And we have seen that more than 50 participants were continuously watching this event on YouTube Live. So thank you once again. And thank you. Now you can leave this meeting. Officially, this meeting has been over. Regarding certificate, a small announcement is there. Please do not query about certificate in the coming week. We are going to post the certificate in the WhatsApp groups only, so do not leave the groups, and the certificate will be provided to you after 10 days. So please do not make a query regarding certificate in the coming 10 days.